हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्ट्रीम। दिस इज HuntergeniX और आज हम खेलने वाले हैं 2.6 का। शायद ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि नया क्वेस्ट है, मेन क्वेस्ट है। इसको हम खेलने वाले हैं। और शायद इसमें ये चीज़ है कि अगस्टा जो कैरेक्टर नया आया है, अगस्टा शायद अगस्टा है ये, शायद है, तो ये याद नहीं है ठीक से। लेकिन हाँ, उसका कैरेक्टर ही है यहाँ पे। उसको उसके साथ ही खेलेंगे, अगस्टा ही है, उसको ही खेलेंगे। और पता नहीं ये फर्स्ट चैप्टर अभी क्यों दे रहा है, ये तो बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी हो। ठीक है। अभी ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको कंप्लीट करेंगे। शायद ये बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि मैं अभी तक इसका कि चेक किया ही नहीं था, थोड़ा तबीयत खराब था, तो ये वो मतलब बीच बीच में हो जाता है। तो ये इसके लिए देखा नहीं था, इसको देख लेते हैं। और थोड़ा डिसकंटिन्यू भी हो गया हूँ बहुत, छोड़ो। और इसको देखेंगे, उसके बाद शायद इसका और एक पार्ट आएगा, शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि ये नया चैप्टर है, मतलब ये हो सकता है इसका सेकंड चैप्टर भी आ जाएगा। और ये टाइम, ये स्टोरी चल रहा है, ये इसका कोई बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। मतलब अभी सितंबर में तो ही ये, मतलब मुझे लग रहा है कि और भी बहुत 2-3 चैप्टर आएगा ही शायद मेन स्टोरी का, हो सकता है। क्योंकि अभी तो ये खत्म ही नहीं हो रहा है, चल रहा है। जितने बार मतलब सोच रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। चलो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका क्या चल रहा है। और हाँ, और एक चीज है, मैं अभी तक कोई भी चीज को अभी पुल आउट नहीं किया हूँ। बैनर आ रहा है, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिला है, नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट टाइम किए थे, एक को किए थे, उसके बाद और किसी को पुल आउट नहीं कर पाए। अभी तो ये इस बैनर में जितना भी है वो तो नहीं कर पाएंगे, देखेंगे, बाद में देखेंगे। और ये जे कि इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया, वो गेम भी थोड़ा खेल भी नहीं रहा था, तो इसलिए ये सब पुल आउट नहीं कर पा रहा हूँ। बाद में देखेंगे इसको, बाद में फिर से आएगा तो कर लेंगे। लेकिन कार्लोटा शायद सेकंड टाइम आया है, शायद पता नहीं, ये मुझे लग रहा है सेकंड टाइम आ रहा है। और शोरकीपर भी शायद सेकंड टाइम, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये सेकंड या थर्ड टाइम है। लेकिन शोरकीपर आ चुका है, उसको देखेंगे, ट्राई करेंगे। मुझे तो शॉर्टकट ही चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। देखेंगे, ट्राई करेंगे। और अगस्टा को लेंगे, लेकिन उसका मुझे टीम बिल्डअप थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो है जिसको हम ले सकते हैं अभी, लेकिन टीम बिल्डअप नहीं कर सकते अभी, थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। अभी इसको कर भी नहीं पाएंगे। कार्लोटा का भी कर सकते हैं, लेकिन टीम बिल्डिंग नहीं कर सकते, इसका टीममेट नहीं है मेरे पास। और शॉपकीपर का है, टीम कर सकते हैं, उसका कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो मेन कैरेक्टर जो है वो, मतलब यहाँ पे जो 5 स्टार का है, अगस्टा और कल्लाटा, इसको कर नहीं सकते, इसका टीम मेरे पास नहीं है। इसको पुल आउट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, मुझे नुकसान ही होगा। और मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स हिसाब से मैं इतना पुल आउट नहीं कर सकता। जो हो रहा है उतना ही कर सकते, इतना पूरा भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी हमारा अभी चल रहा है गेम, क्वेस्ट 2.6 का ये फर्स्ट चैप्टर ही है। बाय, क्या था, बाय सन्स बर्निंग हेड। इसको देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि अगस्त के ही है, इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या क्या है। ये शायद वही बेस का, मतलब वो बेस का ही है, जो बेस, मतलब वो बोल रहा हूँ कि जो गेम इवेंट हुआ था एरिना के बाद का है स्टोरी है, शायद मुझे लग रहा है। क्योंकि इसको बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, क्योंकि ये अगस्टा का स्टोरी आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी मेन क्वेस्ट तो इतना जल्दी तो आ नहीं सकता। एक आएगा, उसके बाद दूसरा देखना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइम लाइन में चल रहा है, उसी हिसाब से नहीं आ रहा होगा शायद। और थोड़ा टाइम ले रहे हाइप करने के लिए, हो सकता है वो भी चाहिए मेरे हिसाब से। वो मतलब सोच रहा हूँ, ये अगस्त जब आई थी तो मुझे लगा कि ये इसका स्टोरी आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं था। और बाकी स्टोरी चल रहा है, वो उसको मेंशन भी नहीं कर रहे थे, तो अभी आ गया, इसको पूरा देखेंगे। इसको ये स्टोरी आया, इसका आया, उसके बाद इसका कैरेक्टर भी लॉन्च कर दिए। अच्छा, मैं तो जब देखा गया तो सरप्राइज हो गया कि इसको भी लॉन्च कर दिए। ठीक है, अभी
खेल में ध्यान देते हैं, खेल खेल में क्या होता है देखते हैं। और क्या चल रहा है? ओके, ये क्या कर रही है इतने देर से? जिम्नास्टिक झूला झूल रही है। भाई यार छोड़ दो इसको, ये अपना ही काम कर रही है। ठीक है, तो फिर कर लेते हैं इसको हम। हाँ, ओके, बहुत बातचीत हो गया इसका बातचीत ही खत्म नहीं हो रहा है। का ऑडियो ऑन कर Until लेते, ऑडियो बंद था, नहीं तो ये जो भी बात I कर रही knocked him होगी down with a बहुत single blow. कुछ सुनाई नहीं देगा, बहुत बात करती है। चलो हो गया। We want the berserk beast. Berserk beast. What's that? A cheap knockoff of the थोड़ा great सा beast beneath. इफेक्ट मुझे लग रहा है कि गेम में How dare you? रुक रहा है कुछ। Berserk beast. When I grow up, I'll be the strongest gladiator. Mining. हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है, देख लेता हूँ। ग्राफिक्स ठीक ठाक तो है, चल क्यों रहा है, नहीं रहा है ऐसे? ये क्या है, ग्राफिक्स क्वालिटी इतना डाउन क्यों है? ये क्यों हुआ है ऐसा? भाई लास्ट टाइम ऐसे तो किए नहीं थे, ऐसे क्या हो गया? मीडियम लो, वी सिंग तो ऑन है। मीडियम स्मूथ में चल रहा है, लेकिन मेरा ये इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है? मीडियम किस चीज़ का ये सब चल रहा है ऐसे? हाई कर लेते हैं, इसको भी हाई कर लेते हैं। शैडो क्वालिटी मीडियम ही रहने दे, बाकी सब ठीक ठाक है। मोशन ब्लर बंद है, इसको ऑन है। ये तो स्मूथ चलना तो चाहिए, ये ऐसे क्यों चल रहा है? पता नहीं चल रहा है क्यों ऐसे हो रहा है। स्मूथ से ही ये चल रहा है, स्मूथ ही चल रहा है। हाई तो नहीं है अभी तक, एडजस्ट भी नहीं है, ठीक ठाक तो है, स्मूथ नहीं है। Raguna's traditional delicacy, pizza topping cow. Did you bet right on the last match? Leonidas Hunter, you're home away from home in ओ September. भाई यार, यस, बारिश खतरनाक लग रहा है भाई यार। हाँ, एक चीज़ है कि मैं मोबाइल में नहीं खेल रहा हूँ, अभी मैं लैपटॉप में ही खेल रहा हूँ। Leonidas Hunter, मोबाइल में थोड़ा इशू हो गया, तो सर्विस सेंटर जब गया तब से मैं मोबाइल नहीं खेल रहा हूँ, मोबाइल से नहीं खेल रहा हूँ। प्रॉब्लम हो गया मोबाइल में खेलना, ये प्रॉब्लम है कि कभी स्क्रीन डैमेज हो गया, गिर गया था, Time for स्क्रीन another डैमेज हो nap. गया, तो उसके लिए Leonidas कुछ नहीं कर Hunter, पाया। you're home away from home in और September. एक चीज़ है कि गेम खेलते खेलते बैटरी ख़त्म हो जाता है, तो वो उसका भी पूरा नहीं कर सकते। एक मिशन करते हैं, मतलब 3 घंटा तो खेलते हैं, ये 3 घंटे आराम से नहीं खेल पा रहे, बैटरी ख़त्म हो रहा है, Oh, तो well done. उसके लिए ये चल रहा है। लैपटॉप नहीं कर रहे, ट्राई कर रहे हैं, लैपटॉप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा, लेकिन तब भी ट्राई कर रहे हैं, हो जाएगा। बाकी गेम खेल रहे हो जा रहा है, लेकिन वेदरिंग वेव तक थोड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा ज़्यादा ही लेता है ग्राफिक्स, पता नहीं क्यों कि मतलब इसका इतना ज़्यादा क्यों लेता है, लेकिन हो जा रहा है, कोई पता नहीं। चलो आगे पहुंच के, अभी कितने दूर है वो, ज़्यादा दूर नहीं है, हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि वहीं से स्टार्ट हो जाएगी स्टोरी। ओके, ये चल रहा है। ओ भाई भाई भाई, क्या कर रहे हैं भाई? किसका वीडियो? अच्छा, ये शूटिंग चल रहा है क्या भाई साहब? क्या कर रहे हैं तुम लोग? नहीं, कुछ नहीं दिखा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। भाई वो तो कर ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो कर रहे, हाइड कर रहे क्या? ओके ओके, ये फाइट कर रहे हैं तो ये देख रहा है। Looks like they're about to fight. Oh, shh.
पुश Shouldn't भी we नहीं कर stop रहे, them? सिर्फ यहाँ पे शो कर No, रहे no, हैं no. This. और फोटोशूट कुछ कर रहे थे। देखते हैं, इसका ठीक चल रहा है लेकिन पता नहीं ग्राफिक्स मुझे थोड़ा कैसे डाउन ही लग रहा है, पता नहीं। स्मूथ चलना चाहिए लेकिन पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है। आराम से चलता। वी-सिंक को बंद कर दिए, वी-सिंक को बंद करने से हो जाता लेकिन पता नहीं, ट्राई करते हैं। Say, how much would it cost to stay in this ठीक है, suite वी-सिंक को for a बंद ही कर month? देते हैं क्योंकि थोड़ा ग्राफिक ज़्यादा वो Well, खींचेगा, लेकिन that अब certainly cost you उसके लिए quite से a थोड़ा bit. हो सकता है, बाद में देखेंगे। नहीं, बाद में क्या देखें, ये तो वी-सिंक का ही काम है, ज़्यादा ग्राफिक्स ले सकता है। Ooh, sure is a beautiful day. ओके, ना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और भाई अभी बहुत दिन के बाद क्या चल रहा है? So, any news from the F4 rover? Or are we still chilling like we've been for the past few days? भाई चिल तो तू ही कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तू ही चिल कर रहा है। Good day, Madam Rover. I am Damien, an attendant in service to the Afor's palace. वो By भाई direct पूरा command, I have come to deliver you Her Excellency's personal letter. भाई यार बहुत ही पोलाइटली बोल रहा है भाई, एक्सपीरियंस्ड है। It concerns a matter of utmost importance. क्या बात है? Me and my big mouth. तेरा माउथ ही बिग नहीं है, तेरा पेट भी बहुत बिग है, बहुत खाता है तू। Hey, what does it say? Scooch up a bit. क्यों चल रहे भाई? It ये क्या says है? Augusta has taken care of everything on her end. She's ready to meet us at the F4's palace as agreed. नाइस, इनविटेशन मिला। It's most likely something to do with the hunt. अच्छा, स्टार्टिंग से ही फाइट करना है। We shouldn't keep the F4 waiting. Time to go, Abby. Oh, you mean now? भाई फिर से सोना चाहता है क्या? नाव का मतलब क्या है? Well, I'll think I'll sit this one out and leave all the heavy stuff to you guys. सोच ही रहा था, वही कहने वाला ही है। बंदा बहुत ही रिलैक्स माइंड का है, कुछ काम करने का नहीं है इसको। Chat for as long as you like. Just give me a holler if you need me. भाई तू सो जा, तेरा कुछ काम नहीं है अभी। जब हेवी टास्क आ गया तब भी करेगा, उसके बाद नहीं, और उससे पहले कुछ करने वाला नहीं है। और अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इनविटेशन मिला लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। और चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको, इनविटेशन तो मिल चुका है। अरे एक साथ पूरा दे दो ना भाई, ये क्या चल रहा है? गाइड के जैसे मार्क दे The दे F4's के palace is just चला ahead. रहे। कहाँ पे जाना है? वहाँ पे जाना है। Oceans. अरे यार Bow before. ये थोड़ा मुश्किल मुझे हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। Looks like Augusta's already taken care of everything. हाँ Let's यार do this. बहुत ही खतरनाक बंदा होगा ये, जिस टाइप का ये यहाँ पे वेलकम हुआ है इसको। Greetings. By Her Excellency's command, you are free to enter. के नाइस। ओ भाई ये साउंड भी देखो, कारपेट में चलने का साउंड। Greetings. By Her Excellency's command, you are free to enter. ये एक भी मुझे याद आ रहा है कि वहीं पे एक मतलब बाहर का कोई शायद कौन सी कंट्री का पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे Greetings. गेट में By Her Excellency's command, ऐसे you are खड़े free रहते to हैं, enter. तो वहाँ पे रेस्पेक्ट देते हैं कि जब एंटर करते हैं तो वैसे ही ग्रीटिंग्स करते हैं, मतलब बाव करते हैं, और उसके बाद तुम एंटर कर सकते हो। तुम अपने आप ही एंटर करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसका Greetings. काम कर रहेगा। By Her लेकिन Excellency's जब तक command, तू you are free एंटर to नहीं enter. कर सकते हो पूरा, तब तक ऐसे ही करता रहेगा वो। और ये लास्ट में ऐसे ही है कि वो गुस्सा आके उसको भगा रहा है, तो मतलब एक ही
मीम था वैसे, कुछ मीम तो नहीं, पास Greetings. कुछ By तो Her बोल सकते हैं, शॉर्ट्स Excellency's या रील्स था command, कुछ। you are free to enter. भाई वैसे ही याद आ गया, वो मतलब वैसे ही कर रहा है। और जब तक मैं एंटर करूँगा वो इतना ही करेगा, वो भी वही चीज़ बोलते रहेगा, रिपीटेडली वही चीज़ बोलते रहेगा। Greetings. By Her Excellency's command, you are चलो हो free गया to इसके enter. साथ बकचोदी। चलो A4 प्ले पैलेस। अच्छा वेलकम टू, ये क्या है? आई कैन असिस्ट यू, असिस्ट, अच्छा असिस्ट है मेरे, असिस्ट करेगी, चलो आजा, क्या बात है। हाउ मेनी असिस्ट यू टुडे? असिस्ट व्हाट? राइट, वो पूछ रहे थे कौन सी चीज़ का असिस्ट करना है। हैंडल ट्रेड रिक्वेस्ट, पब्लिक फीडबैक, ऑफिशियली। अच्छा ये इसका अलग ही चल रहा है इसके साथ। टेम्परेरी रेसिडेंट सेटलमेंट, यू अप्लाई फॉर टेम्परेरी, टेम्परेरी रेसिडेंट, पूरा रेसिडेंट ही बदल जाता है अगर टेम्परेरी क्यों है? अभी यहाँ पे तो सब मिशन ही चल रहा है, टेम्परेरी क्यों ले? एक घर भी मिल जाएगा यहाँ पे रहने का, मतलब जब भी ये मिशन खत्म होगा तब तक वो मतलब मेरा पूरा जो बोलते हैं कि लाइफ टाइम के अंदर जितना भी अर्निंग है वो कर सकता हूँ, जितना टाइम ये मिशन चल रहा है। मतलब गेम का मतलब खुद का तो अर्निंग भी ठीक से नहीं हो रहा है। और क्या चल रहा है? Divinity must have concerned September handle right now. Once your applicant is submitted, you can set responsible 3 or 5 working days. अच्छा तो पूरा क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर तरीके का ये गेम बनाए हैं, पूरा सब डाल दिए हैं एकदम से। ओके इसके साथ बाद में बात करेंगे, मुझे तो अभी वैसे कुछ चाहिए नहीं। अरे यार ये क्या है, एक मिनट। अच्छा हाँ मैं लास्ट टाइम इसको पहना था, हाँ ये मुझे याद नहीं है, लास्ट टाइम मैं पहना था, इसको भूल ही गया था पूरा। इसमें इनविटेशन लेटर है, ये अभी ऐड हुआ है, और मुझे कुछ तो मिला था उस समय जो पहना था, कहाँ गया वो? क्राउन 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 कहाँ गया क्राउन? कुछ नया चीज़ मिला है भाई, इसके पास नहीं है। क्राउन का सिस्टम कहाँ गया? क्राउन था ना यहाँ पे, ये तो खाने का चीज़ है। ओके ओके ओके, भाई क्राउन पहन चुका हूँ, वो उतारते हैं कैसे? यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, कहाँ गया? ये रहा क्राउन, भाई ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे। कस्टम बट नेसेसरी, अच्छा ये लिमिटेड टाइम के लिए था, लेकिन अभी मुझे ये परमानेंट मिल चुका है शायद, इसको भी यूज कर सकते हैं बर्थडे के सरप्राइज आइटम। ओके ठीक है, हो गया, इसको हम पहन के रखे हैं, अच्छा लग रहा है, रहने दे। जैसे वैसे तो यहाँ पे आ चुके हैं, तो मेरा भी क्राउन मिल चुका है। यहाँ पे इतना साइलेंट क्यों है? शायद कुछ म्यूजिक बज रहा होगा, पता नहीं। ओ भाई यार, नाइस।
Impressive. I expected a challenge, but your performance far exceeds what I had imagined. Just as I thought. Watching from the Colosseum's balcony is no way to understand a warrior's true spirit. भाई यार ये वेलकम करने का कौन सा तरीका है, मुझे समझ में नहीं आया। वॉरियर मन का मतलब उनका वेलकम करने का तरीका बहुत ही खतरनाक है। कुछ प्रूफ दिखाने के लिए इतना आगे जाना जरूरी है क्या भाई यार। चलो अभी तो इसका स्टोरी स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अभी तक ये स्क्रीन में नहीं आया है कि स्टोरी स्टार्ट हो गया। पता नहीं ये कब स्टार्ट होगा, शायद कन्वर्सेशन के बाद में हो सकता है। लेकिन इसका जो एंट्री था ना भाई खतरनाक था, जो लाइटनिंग फास्ट का जो एंट्री था भाई यार खतरनाक। Only by crossing blades can I feel the will to fight pulsing through your veins. Come, step closer. Laureate of Raguna, champion of Septimont, favored gladiator of Arsinosa. By the honor of these titles, it is only right you stand by my side. I, Augusta, Ephor of Septimont, offer you my highest esteem. भाई वो चीज मैं पहले बोल चुका हूँ भाई, बहुत ही खतरनाक टाइप का ग्रीटिंग्स था गेस्ट को वेलकम करने का। और ये मेंशन भी कर दिया है भाई, जो बोलना चाहता था वो भी मेंशन कर दिया। ठीक है, बहुत ही अजीब है। Simple and efficient. No need for pleasantries. Here we let our blades do the talking. The Septimont way. भाई ये कौन सा सिंपल तरीका सोचा है भाई, ये तो कोई सिंपल तरीका भी नहीं है। लेकिन हाँ ये एक थोड़ा एक्सट्रीम तरीका है बोल सकते हैं जज करने के लिए, मतलब देखने के लिए कि उनका वॉरियर कितना स्ट्रांग है। I have no doubt that you and I will have plenty of opportunities to get acquainted. But that's not why I called you here today. हाँ, और एक चीज है कि अगस्टा का जो स्टोरी टाइम है, मतलब स्टोरी टाइम बोलो, स्टोरी लाइन है पास्ट का, बहुत ही सैड है, सैड स्टोरी है। लेकिन वहीं से इसका जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है, तो हो सकता है कि ये अनइमेजिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नहीं तो इतने बड़े मतलब एम्पायर खड़ी करना और वहाँ पे ये रूल कर रही है, बहुत मुश्किल होगा। वो स्ट्रगल की होगी, तो इसका स्टोरी हो सकता है वहाँ पे स्ट्रगल करने का। अभी तक पहले पार्ट में किए थे, उसी हिसाब से इतना लग रहा है कि स्ट्रगल की है। On my behalf, and that of the Ephor's Palace, I extend my deepest apologies for failing to keep our appointment. शायद इसका अपॉइंटमेंट पहले भी शायद हो चुका था। मुझे लगा है कि वो स्टोरी थोड़ा डिले करके रखे हैं, इसलिए ये यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है, हो सकता है। I hope this delay hasn't dampened your enthusiasm for the hunt. हाँ वही तो चीज़ है, मतलब डिले हो चुका है उसके लिए ये बोल रही है। और उसी हिसाब से इसका पार्ट भी थोड़ा डिले में आ रहा है, लेट आ रहा है, और उसको मेंशन करके यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है,
urgent, no need to apology. You are very much made up for it. इमरजेंसी क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी ये इसको बोल सकते हैं कि सेकंड को बोल सकते हैं। Tolerant and strong, just as I've heard. Virtues of a true hero. Well then, seeing that your interest still holds, shall we discuss it? भाई इसका स्वॉर्ड है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत इस टाइप का स्वॉर्ड है भाई। इसी कोई भी एक बॉस मॉन्स्टर आ जाए ना, एक ही बार में खत्म हो जाएगा भाई। जिस तरह का ये स्वॉर्ड दिख रहा है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। The hunt. In Septimon's long fight for survival, it holds profound significance. It is both honor and duty. For 100 years, countless gladiators have taken up the hunt and met their end in glory. It is no exaggeration to say that the blood of gladiators still burns in every inch of the Crimson Sanguis plateaus. Our ancestors built the defenses that line those grounds. To this day, they stand as the front line of Septimon's resistance against the Dark Tide. You've surely noticed the lingering blight cloud that hovers over the Sanguis plateaus. Since the first Dark Tide outbreak in Rinasita, that place has become a breeding ground for its horrors. As you've no doubt realized, our prey are tacit discords, born from the Dark Tide. Only those who desecrate Septimont fall beneath the gladiators' blades. The high tide is upon us, and it will be a storm like no other. My hunting party requires unstoppable warriors. Sacrifices are inevitable, but I believe you will be a banner that stands unbroken, Rover. There are plenty of great gladiators in Septimon। वो तो है, लेकिन तब भी अ, हार गए हैं। इवेंट में सब हार चुके हैं। ये रॉबर ये मतलब फाइनल पोजीशन में जाके जीत के आई है, और वो उनको नहीं दे सकते ना, जो अभी जीत के आई है उसको ही देगी। What made you want to invite me in this hunt? I share your sentiment. Septimont takes pride in its many remarkable gladiators. But you are exceptional. A grand hunt awaits us, and my warriors and I long to do battle alongside a fighter such as yourself. Of course, the will of the extraordinary deserves to be heard. I'd like to know your thoughts on the matter. I agree to join your hunt. I'll have one goal to accomplish. किस टाइप का हंट है वो देखना पड़ेगा। A straightforward answer. I like it. भाई इतना तो पता चल गया है कि जितना भी स्ट्रांग ओपोनेंट है, जितना भी स्ट्रांग कैरेक्टर है, उनसे बात करना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। As for this goal of yours, गोल क्या है भाई? अच्छा, सेंटिनल रेलिक था ना। अच्छा हाँ, वो भूल गया मैं, सेंटिनल रेलिक था, उसको अ, मतलब एक्वायर करना था। जर्नी पैराडाइज उसको बोलना है। अच्छा
Ah, yes. The Journeying Paradise. I've heard that laughable name before. A pity the hunt was made to shatter that little fantasy. ओ भाई यार, फैंटेसी नहीं है भाई, जेन्युइन है। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, जो ये सबको बिलीव, मतलब बिलीव कैसे करेगी? वो तो अपना खुद का जो स्ट्रेंथ है उसको ही बिलीव करेगी ना, दूसरा कुछ बिलीव तो नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक उसको सामने कुछ वैसे ओपोनेंट नहीं मिली जिससे वो हार सकती है, तो वो बिलीव क्यों करे दूसरे को? वो उसके लिए ये फेरी टेल या फैंटेसी टाइप का हो सकता है, इसलिए। As for the Sentinel's relic, go to the Earthrend Wedge. It's where the Sentinel Imperator first descended upon the Sanguis Plateaus, and is the epicenter of every hunt to this day. सेंट्रल एम्फिटर फास्ट डिसेंडेंट, अच्छा। However, due to its significance, not even Septimon's highest officials are permitted near it. But if that is what you wish, say no more. I will make it happen. The trust I place in you stems from your recognition of my character. I admire your honesty, and I will honor it to the fullest. Only those bound by trust can go the distance together. भाई वो स्वॉर्ड गाड़ के रखी है ना, वैसे खड़ी हो गई है ऐसे ही, और ये मतलब ग्लो कर रही है अंदर से। कोई स्टोन है या क्या है? कुछ पावर स्टोन होगी, मुझे लग रहा है वैसे कुछ, लेकिन बहुत पावरफुल लग रहा है। देख के खुश होना चाहिए, क्योंकि वो एक्वायर कर नहीं सकते, इसलिए। I look forward to the hunt ahead. It honors me to journey by your side. व्हेन डू वी लव टू लीव, अच्छा मतलब कब स्टार्ट करेंगे जाने के लिए? जाना जरूरी है। Patience, my friend, is the first step to becoming a hunter. भाई और कितना हंटर बन सकते हैं? पहले से है, नाम भी दिए हैं, और क्या चाहिए? When the storm rages in the skies southeast of Septimont, I will await you at Tempest Cliffs. ओके। फाइनली स्टार्ट हो गया ये स्टोरी। भाई यार, सस्पेंस रखता है भाई, खतरनाक है। No need to worry, the efforts place will still cover your expenses in September। भाई ये हो सकता है तो कुछ एरिया दे सकती है रहने की, जैसे कि ये गेट में वो बात कर रही थी, अच्छा होता। एक्सपेंसिव होता, मेरा कुछ खर्च नहीं हो रहा है। चलो, एंजॉय प्लेस वाइल इट लिस्ट, अच्छा हो जाए तो। Stormy coming in are we didn't know। तो कहाँ जाना है? पीछे ही? अरे यार, ये सब यहाँ पे कुछ रुके हुए, कुछ तो काम है इनका, पूछ लेते क्या कर रहे हैं। joining the hunt this time, one of the youngest cutlet rank, अच्छा। just okay, remember Avidius start just as young। अच्छा, ये सब यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि इनका मतलब कुछ मतलब हंट के लिए जाने हैं ना, तो ये सब खड़े हुए डिस्कशन कर रहे हैं, और कोई कोई जा सकते हैं, क्यों पता नहीं।
और ये जो कैरेक्टर है ये शायद अच्छा ये वॉरियर जितने भी उनका है ना, लास्ट टाइम ऐसे ही कुछ कैरेक्टर था ना जिनका जो लास्ट में इम्परेटर का कुछ पार्ट निकली, वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। हम्म will be hunt. I will until stepping up the big one or the character Federico, ये कौन है? Need a chance like this to prove himself. फ्रेडरिको कौन है? और यहाँ पे कौन है? मार्क। ओके, so just related matter. If you have any query, feel free to ask. Okay, huge span. Okay. Each type icon different Deva tools lips of attention, planning strategy. Detail knowing the detail help with the planning strategy. अच्छा, ऐसा है क्या? तो फाइटिंग मतलब इवेंट करना इनके लिए फायदा हो रहा है कि को क्या स्ट्रेटेजी लगाना है क्या नहीं। अच्छा है। ओके, ओके। एक टाइप में ये है कि लूपा को कैरेक्टर में उसका टीम अलग है, लेकिन यहाँ पे लेना सही होगा क्योंकि ये एरिया लूपा के ही है ना, सेप्टेमन का ही है वो, तो उसको लेके खेल लेंगे। मतलब स्टोरी में खेल सकते हैं, वैसे मेन स्टोरी में खेल सकते हैं, उनको ये बॉस फाइट के लिए उसका टीम जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हो जा रहा है कुछ वैसे थोड़ा सा साइड जो बोलते हैं कि हेल्प मिल जा रहा है, लेकिन लूपा का टीम अलग है। यहाँ पे कर दिए हैं क्योंकि मेरे इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मतलब ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग टीम एक चाहिए था। मेन कैरेक्टर है, उसके बाद सेकंड सेकंड जो फाइट लेने वाला और एक सपोर्ट तो है भगवान, इसीलिए लूपा को रखे हैं सेकंड के लिए। मेन कैरेक्टर तो कहते दिया है, उसके बाद लूपा। लेकिन यहाँ पे इनका कैरेक्टर में लूपा नहीं होना चाहिए, इनका टीम में लूपा नहीं होना चाहिए, लेकिन रखे हैं। तो ये वैसे कुछ स्ट्रॉन्ग टीममेट भी तो नहीं है ना मेरे पास। अभी लूपा के लिए है मेरे पास लूपा के टीम के हिसाब से मेरे पास है Let me अभी। be there for everyone. इसको To एक्वायर which कर लिए हैं, stage will life guide us next? तभी ये लूपा में आ जाएगा इसका। इनके लिए एक Whoa! सपोर्ट चाहिए, मेडिकल या हीलर प्लस सपोर्टर, दोनों एक साथ ही चाहिए मुझे। उसके लिए देख रहे, पूरा टीम कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, उसके लिए ही देख रहे। Ugh, can't eat another bite. That's another full stomach for Abby. भाई यार ये जब भी उड़ता है या उड़ती है, जो भी बोल सकते हैं, ये भाई ये क्रीचर खाने का ही सोचता है भाई, कुछ काम धंधा नहीं है। जब भी देखो खाने का सोचता है, और नहीं तो सोने का। Huh? Hey, Rover? Look, over there.
क्या है वो? That's a storm. अ, ये 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 बहुत खतरनाक है भाई। ये क्या है? Which means it's about time to meet up with Augusta. रियली? ओ भाई, ये पीछे का सीन खतरनाक है, रियल लग रहा है पूरा। Tempest Cliffs. I remember, that's where she told us to go. अच्छा लग रहा है देखने के, बहुत ही रिलैक्स लग रहा है ये सीन। लेकिन क्या कर सकते हैं? Well, you better hurry. Same as always. Call me when you need me, and I'll be out in a flash. भाई तू तो जब इमरजेंसी है उस समय ही निकलता है, बाकी टाइम में हेल्प ही नहीं कर रहा है। तुझे खाना चाहिए। जितने भी है ना, मतलब जो बोल सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, मॉन्स्टर का पार खा रहा है ना, तो हर वक्त जागना जरूरी है तुझे। आराम से इजीली खा सकता है। ओके, अभी जाना कहाँ है? स्टॉर्म कहाँ गया? ओ भाई यार, ये वाला चीज भाई खतरनाक लग रहा है। ओके, वहां पे एक है, वो मैं लेना चाहता हूँ। This should be the right way. If you're heading for Tempest Cliffs, head east. This path will take you straight to the Courtyard of Glory. ये कौन है? ब्लॉन्ड? Or perhaps, would you care to travel with me? भाई तू कौन है? After all, we share the same destination. Your reputation precedes you. Honorable Rover. शायद जो हंटिंग टीम है उसका कोई पार्ट होगा ये। I am Gladiator Avidius, at your service. लग ही रहा था, इसका नाम आया था, और अच्छा हुआ कि मैं वो जितने भी कैरेक्टर है उनसे पूछ लिया था। स्टोरी लाइन में हर चीज को पूछना जरूरी है, जो भी इवेंट आ रहा है देखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज मिस हो जा रहा है। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था कुछ, इसलिए मैं सबकी चीज चेक करके जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि साइड कैरेक्टर रिवील कर दे, जरूरी है। Gladiating and hunting are the very pillars upon which the glory of Septimon stands. I believe no gladiator would refuse such an honor if invited. I, of course, am no exception. Please, if you'll follow me. Honored guest from afar. ओके, अरे यार वो कहाँ गया? अरे हाँ, वो आ गया। चलो भाई, चलो चलो, फॉलो करो। Augusta spoke of the great surge we are about to face. The F4 speaks the truth. And this year's high tide has come later than usual, which bodes ill. भाई रुक It's a जा, shame रुक जा। even the sharp ears of the Senate could not chisel through the high walls of Tetragon Temple to hear the whispers beyond. Is this an auspice of calamity or a prelude to a new legend? Only भाई time will प्रूफ होगा tell. क्या? मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ। अभी मूव नहीं कर रहा है ठीक से। अच्छा, इवेंट के बीच में ये काम नहीं कर रहा है ना, रिटर्न जाना ही पड़ेगा। इवेंट के बीच में ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी मैं ट्राई करने वाला हूँ। फॉलो की वजह से ये नहीं, मतलब वो नहीं हो रहा है ना, लेकिन पहले ये कर लेता हूँ।
बाद में पता नहीं आएगा कि नहीं। चलो हो गया। क्रोनस कैस्केड पंच पंच पंच। चलो आ गया। Augusta spoke of the great surge we are about to face. The F4 speaks the truth. And this year's high tide has come later than usual, which bodes ill. It's a shame even the sharp ears of the Senate could not chisel through the high walls of Tetragon Temple to hear the whispers beyond. Is this an auspice of calamity or a prelude to a new legend? Only time will tell. ये क्या challenge on buff With a dark बेसिक tide लाइन upon का। us, the time has come for you to prove your अच्छा valor in combat. अच्छा, ये इसमें फ्यूजन इंक्रीज हो चुका है 25% इसमें। अच्छा इसमें लियोनेड ग्लोरी। अच्छा वो मैं एक्चुअली ये एक इवेंट Weapons आया था, tight. वहां पे Always मैं be ready कुछ for anything. कंप्लीट किया With a था dark इवेंट, tide upon जिसके us, लिए the मुझे time has ये come for you to सेफ्टी prove पॉइंट your में valor in combat. जितने बार भी मैं खेलूंगा उसके बाद मुझे कुछ 25% का इंक्रीज मिल रहा है फ्यूजन का, तो वो फ्यूजन यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छी बात है, मैं इवेंट कंप्लीट कर दिया हूँ। चलो फॉलो करो। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ वही चीज है या नहीं। मुझे तो वही लग रहा है, ब्लेसिंग ऑफ लाइन ऑफ ग्लोरी। इसका जो टाइटल है ना ये मुझे मिल चुका है, इसलिए शायद हो सकता है कि वेरियर पास द ट्रायल प्लेस बाय लाइन ग्लोरी विल ऑल रेजिनेटर इन टीम हैव अटैक मैक्स एचपी एंड फ्यूजन डीएमजी इंक्रीज बाय 25%। जो फ्यूजन डीएमजी है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मुझे फ्यूजन का लूपा के पास है जो ऑप्शन फ्यूजन का, वो मिल जाएगा। 25% ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्यूजन का। चलो अभी इसको कर लेते हैं। ओ भाई यार ये तो खतरनाक है, इसको थोड़ा मैं देख लेता हूँ एक्टिवेट होगा नहीं तो। ओ भाई यार रुक जा, आ रहा हूँ। ओ ये सब रेस्पेक्ट दे रहे क्या? Did you hear? This one's serious. The pleasure of escorting you to the F4 has been fulfilled. For now, my duty ends here. From here, we march onward to the hunting grounds, where the dark tide's creations may await us. When the time comes, it will be a true pleasure to see your skills in action. बट डरा रहा है या बोल रहा है? स्किल देखना है तुझे है? Happy hunting. Come, join us, Rover. भाई सुना ही देता है भाई, इतना जो चिल्ला रहा है। The horns signal our departure. सिर्फ पैर ही देखना है? क्या है ये सीन? यहाँ पे कट सीन क्यों लग गया? ओके अच्छा, वी सेंड आउट फॉर टेम्पेस्ट क्लिफ। यहीं से जाना है, कूदना है या क्या करना है? Precisely. These cliffs mark the opening of our campaign. ये ये भाई यार ये कौन सा एरिया है ये? कभी यहाँ पे आए नहीं ना, पता नहीं ये कौन सा एरिया में आ गए। देयर इज नो ब्रिज टू द अदर साइड। हाँ वो तो दिख रहा है, पूरा टोटली खत्म ही है, और ये इतना ऊपर है कि नीचे दिख भी नहीं रहा है कहाँ है ये।
ओके वेट ग्लाइडर ग्लाइडर यूज करेंगे तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से उड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। Take courage, my friends. The path to glory will reveal itself under the feet of the brave. तो करना क्या है? Was that? The knight's challenge has arrived. Getting restless, Owl. That is a Corrosaurus, an abomination of the dark tide. Do exercise caution. In control. Barely managed. Now is not the moment. Let it flee. The path it takes leads deeper into the trap we laid. भाई इतना इंटरेस्टिंग सीन बीच बीच में आ चुका है, बोल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे रिकॉर्डिंग करना भी है। बोल देंगे तो वो सीन खराब हो जाएगा, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट तो बहुत खतरनाक था भाई यार। ऐसे सीन बीच में देना है तो पहले बोल देते भाई कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो पहले से जो एक्साइटमेंट है This वो is a निकाल testament देते to my और बाद में connection वो with the world सीन को around आराम me. से देखते। And it's लेकिन very भाई much my चल रहा companion है तो now, चलने दे भाई, bearing witness देखते to हैं। everything I've तो experienced on इसलिए मैं this चुप हो journey. गया कि भाई कुछ बोला भी नहीं, ये सीन देख के क्या ही बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग की वजह से चुप हो गए भाई। इसको एडिटिंग करना बहुत अच्छा लगेगा, खतरनाक सीन है। चलो फॉलो करो That इनको। sound. It's from Hornet. An echo. It's signaling we retire for the day, that's all. Augusta, time to bring your party back to the Hunter's Den. Of course, priestess. Your arrow couldn't have come at a better time. Seeing that Rover is here, I'll take that as a compliment. अच्छा The इसमें Hunter's म्यूजिक Den. नहीं, म्यूजिक नहीं है। The busiest gladiator encampment across the Sanguis Plateaus. Nearly every hunter passes through here on their way to the hunting grounds. मुझे लगा कि वो एक ही क्रीचर था जिसको हंट करना था, टीडी था ना, एक टीडी है, लेकिन ये
एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी यहाँ पे पूरा सीन, पूरा मिशन यही चलेगा हंटिंग की। देखते हैं कितना टाइम लग रहा है ये हंटिंग, उसके बाद स्टोरी कितना तक जा रहा है, तो उसे आइडिया हो जाएगा कि ये एक पार्ट में तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। लग रहा है कि हो सकता है, ये इसलिए तो फास्ट पार्ट ही बोला, क्योंकि अभी जितना जो सोर्स मुझे मिला है वहाँ उससे तो लग रहा है कि ये फास्ट पार्ट ही है, तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये फास्ट पार्ट है। उसके बाद हो सकता है कि जितना टाइम लगा है ना, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे तो खत्म नहीं होने वाला है, और भी चलेगा। We will rest here before setting off for the next hunt. नेक्स्ट हंट मतलब ये एक नहीं है, और भी है। I must admit, this place is rather magnificent. और ये प्रीस्ट है, कौन से एंगल से लग रहा है कि प्रीस्ट है? I suppose my predecessors forsook the peace they ought to have enjoyed just to share this hard-earned land with these hunters. Such magnificence is rightly owed to the temple. इसका भी बैनर आ चुका है, इसका भी कर नहीं सकते अगस्टा और ये लूना, इसको अभी तक लेना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पुल आउट करना लग रहा है थोड़ा लेट होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। The priestess's words are not without merit. I am well aware that I stand under blessings and will forever remember the sacrifices of the temple. Now, if you'll excuse me, I'll be taking my leave. ये बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। Though we've already met, I suppose a proper introduction is in order. यहाँ पे वो जल्दी में, मतलब नेक्स्ट कंपनसेशन के अंदर जा रहा हूँ शायद, पता नहीं, ये कुछ थोड़ा लग रहा है ऐसे कि। I am Yuno, priestess of the Tetragon Temple. लूनो नहीं, ये यूनो है, IUNO। The precious get called the the precious the gift of prophecy। प्रोफेसी बोल सकते हैं, प्रोफेसी इसको कहते हैं। Well, aren't you caught up on things? What you say is true, though I've long since grown tired of such affairs. इसका एटीट्यूड का क्या है, क्या चल रहा है इसका? Come now, Rover. Surely you can find me something more interesting to occupy my time. For instance, the hunt. Quite frankly, when it comes to dealing with the dark tide, none of these gladiators can hold a candle to me. Ha! Look at those looks. I've seen them all before. भाई इसलिए इसको कोई पसंद नहीं करते, पसंद ही नहीं करेंगे इसको। चलो What can I say? When you're as dazzling as I am, jealousy tends to follow. देख ही नहीं पा रहे, क्या क्या कहे इसको। I'll be making my way back, Augusta, lest my shine further sting the eyes of certain people. लास्ट टाइम देखे थे ये अगस्टे के साथ बहुत आराम से बात कर रही थी, लेकिन बाकियों के साथ थोड़ा वैसे बात नहीं कर रही है। हो सकता है कि ये हो सकता है कि नेपोटिज्म हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं कि फैमिली में ये है तो उसके जितने भी फैमिली मेंबर है वो ज्वाइन करते हैं, उसी हिसाब से उनका जो पावर दिखाते हैं उसके हिसाब से इसको पसंद नहीं होगी शायद, पता नहीं क्या है। लेकिन लास्ट टाइम कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, लूपा को वो हेल्प कर दी थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या चल रहा है। If you find yourself with free time later, consider visiting me at Tetragon Temple. है Not every outlander is granted access to its sacred halls. Make the most of it. It's rare to see Yuno hold back like that. You must be someone different to her.
यू टू सीम्स वेरी क्लोज। हाँ, ये लास्ट टाइम हुआ था, मैं देखा था इसका सीन जो लास्ट टाइम, मतलब कौन कौन सा बोल सकते हैं ना, लास्ट जो मेन क्वेस्ट किए थे कार्ड वाला, उसमें ये सीन लास्ट में दिखा था कि इनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी अभी जो दिख रहा है कि यूनो का बॉन्डिंग बाकियों से थोड़ा अलग है, लेकिन इसके साथ तो बहुत अच्छा है। Perhaps. We do share some common traits. हाँ, ये हो सकता है। Don't let her unruly side fool you. She is as dependable as they come. Monsters encounter earlier. A Corrosaurus. ये कौन सा कैरेक्टर है? कोरोसर्स? Avidius was correct. It is a tacit discord born from the dark tide. ओके, वो कैरेक्टर जो अभी है म्यूटेंट हो चुका है, टीडी हो चुका है वो। What he didn't have the chance to tell you is that it is the deadliest Corrosaurus of them all. We call it Tyranos. A vanguard of the dark tide that rides its surge to reach our lands. ओके, The Threnodians' attempt to plague Septimont never came to fruition. But do not mistake that for victory. Our enemy will not bow so easily. ओके। गेम में एक चीज है कि थोड़ा डिफरेंट दिखाते हैं, ये स्टोरी लाइन जो भी दिखा रहे, ये हो सकता है कि अलग यूनिवर्स चल रहा है इनका, तो उसी हिसाब से मॉन्स्टर भी अलग है, लेकिन ये तो मुझे नहीं लग रहा था कि इसको भी दिखाएंगे डायनासोर को। पता नहीं, वहाँ के यूनिवर्स में भी हो सकते हैं। The dark tide, immortal and indestructible, carries out the will of its creator, the Threnodian Leviathan. Only the Earthrend wedge that bears Sentinel Imperator's power can sever the link between the dark tide and the Threnodian, burying the calamity deep beneath the Sanguis plateaus. सैंग्विस प्लेटोस, अच्छा इसको सैंग्विस प्लेटोस ये प्रोनाउंस करते हैं। The hunt is how we disrupt the dark tide's frequencies by capturing and eliminating its creatures. सच में डायनासोर है? However, the Earthrend wedge's energy range is limited. Our mission is to deliver a true death to our prey. Meaning we need to hunt and kill the beast near the Earthrender. Is that how we stop the dark tide from spreading? Yes, and it must be done within Maroonwood. This confrontation with Tyranos was expected, but it's not a fight anyone is eager to face. That beast is well aware of our plan. It's no mere prey. In many ways, it's a cunning hunter itself. What is our plan for now? कुछ नहीं, हंट करना है, खत्म करना है और घर जाना है। Now, we wait. We wait for it to enter Maroonwood. भाई तो फिर हंट कब करना है? तो फिर लग रहा है कि टाइम लगेगा। The real hunt begins when the beast's hunger drives it to the wilds. भाई सुन के मुझे भूख लग रहा है। Your Excellency, the senators request your presence in the main tent. भाई यार वॉइस तो बहुत भारी था। It's to discuss plans for the hunting operation. Looks like I'll be occupied for a while. Relax. Take a walk around camp. The hornet's blare will sound our next departure.
अगस्टा उसका हाइट बहुत मतलब ज़्यादा है, बाकियों से भी ज़्यादा है उसका हाइट। It's a sound that can be heard across the canyons. You won't miss it. और ये सिर में ये लगा के घूम रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्या? हर वक्त ऐसे कैसे सिर पे लगा के घूम रही है? हाँ, कुछ तो वॉइस आ रहा है उस पर जो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आ रहा है। वो ये माइक बहुत बड़ा माइक है ये, मैंने सोचा कि छोटा ही होगा। हैप्पी हंटिंग ट्रॉफी 1। अच्छा, ये ट्रॉफी 1 हो गया वैसे। मुझे ये रोवर ही देना है, अभी इसका स्टोरी चल रहा है, इसको ही दे देंगे। और मेरा क्राउन भी अच्छा लग रहा है। चलो, The high tide of unprecedented scale. कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है ये आसपास जिसके साथ बात कर सकते हैं? कोई नहीं है, ये कुछ The है, high tide of unprecedented scale. इसको बात इसके साथ बात कर सकते हैं शायद। ये इसका सिर पे जो मार्क है थोड़ा बाकियों से डिफरेंट है, मार्क नहीं आ रहा है, इसके साथ बात कर लेते हैं, देखते हैं। The high tide of unprecedented scale. ये बार बार ये बात क्यों बोल रहा है? हाई टाइड। Could this be the one in the prophecy? The harbinger of Septimont's doom. प्रोफेसी ये क्या है? कौन सा प्रोफेसी है? सर्टिमेंट। अच्छा, A high tide is a high tide. Every hunt is a gamble with our lives, no matter the size. Just keep your blade sharp. Whatever comes, we cut it down. Don't overthink it. The high tide of unprecedented scale. भाई इसका रिकॉर्डर जाम हो गया। और कौन है? इसका सिर पे कुछ है मार्क, बाकियों का हो सकता है। चेक कर लेते हैं, कुछ मिल जाए तो। इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, इनके साथ भी तो कुछ नहीं है। हाँ, ये इसके साथ नहीं। About Avidius and the Senate. नहीं, ये था ना? हाँ, ये था। इसके साथ, इसके सिर पे ये क्या मार्क आ रहा है ना, इसको देख लेते हैं। चेंज अगस्त टू अलाउ अविडियस टू जॉइन द हंट। उसको जॉइन करना कोई इशू है क्या? विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशन, प्रॉब्लम क्या है उसके साथ? Certain element to invest invested a lot into this. Lord Falco कौन है? I am simply granting her wish. She keeps her throne. Well, sometime better. Start born out. First. कुछ तो डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी वो Did you hear about Avidius and the Senate? अभी पता नहीं, उसका फ्रांस में भूल गया मैं। इसके बारे में कुछ बात करें तो इसके बारे में पूछ लेते, सुन लेते। Did you hear about Avidius and the Senate? एविडियस, हाँ एविडियस। सेनेट क्या है? Power struggle. Nothing new. But going up against Augusta is a steep hill to climb. Going against Augusta? क्यों? Without a strong forte, Augusta's strength was always going to have limits. She lacks the extraordinary power mentioned in the prophecies.
Hard to compare her with a hero of heroes of the past. I wouldn't put it like that. Knowing how Augusta operates, Avidius would even have risen to prominence if she hadn't allowed it. That kind of grace is the mark of a real ruler. और एक चीज मतलब बोलने वाला था कि जितने भी मैं खेलता हूँ उसका मैं दे देता हूँ ये क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं, लेकिन अब मैं वैसे कुछ देने वाला नहीं हूँ, मतलब जो कि ऑब्जेक्टिव क्या था वो पूरा लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ दे दूंगा कि क्या क्या हुआ था और क्या करने वाला था वो दे दूंगा, मतलब जो कवर हुआ है वो दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्या है लिख दूंगा। और अंदर में ज़्यादातर मैं लिख देता था कि ये ऑब्जेक्टिव था, ये करना था, वो करना था, पूरा एक लाइन में लिख देता था पहले, तो वो अभी नहीं लिखने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत डिटेल छोटा भी अच्छा नहीं है, सिर्फ डाल देंगे क्या ऑब्जेक्टिव था वो डाल देंगे और कुछ नहीं। इसमें इतना हो सकता है कि जो देखने वाला जो आएगा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में गेम के बारे में, तो ये थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि ये सब हुआ था, और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि गेम में ये सब होने वाला है, तो सिर्फ दे देंगे, आइडिया दे देंगे कि हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या करना है क्या नहीं वो देना नहीं। पहले मैं थोड़ा दे देता था, कुछ गेम में दे देता था, और अब मैं वो ऑब्जेक्टिव देने वाला नहीं हूँ। सेम ही है, दे देंगे, देने वाला नहीं हूँ पता नहीं, लेकिन सेम चीज़ है, एक क्वेस्ट डाल देंगे क्या था और ऑब्जेक्टिव इतना और कुछ नहीं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, और क्वेस्ट क्या था वो डाल देंगे और कुछ नहीं, इतना ही करना है। क्योंकि बाकी पहले क्या कहता था कि मुझे बहुत मैं एक्चुअली में बहुत पीछे था गेम में, लेवल अप नहीं हुआ था, तो उससे मैं बहुत सारे गेम खेल रहा था एक ही साथ में, बहुत सारे टोटल क्वेस्ट कर रहा था, बहुत सारे स्टोरी क्वेस्ट कर रहा था। स्टोरी क्वेस्ट तो एक ही मेन क्वेस्ट का एक ही टाइम में कर सकते थे, वो नहीं, बाकी जो साइड क्वेस्ट, एक्सप्लोर क्वेस्ट, ये बहुत सारे कर रहा था एक टाइम में, तो उसके लिए मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव और साइड मतलब क्वेस्ट, मेन क्वेस्ट, साइड क्वेस्ट, ये सब डाल के डिस्क्रिप्शन में भर देता था, लेकिन अभी वो नहीं करने वाला हूँ। डाल दूंगा मेन स्टोरी क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इतना और कुछ नहीं, 2-3 लाइन में हो जाएगा। अब पहले क्या होता था कि पूरा लंबा डिस्क्रिप्शन डाल देते थे, अभी नहीं देंगे, शॉर्ट करेंगे, जितना शॉर्ट करेंगे उतना अच्छा है। You now mentioned visiting her at Tetragon Temple. Got a bit of free time. Might as well pay her a visit. ओके, इसके साथ बातचीत हो गया, अभी वहाँ जाना है। जाना कहाँ है? About Avidius and the Senate. Head to the Tetragram Temple. टेट्रोग्राम टेम्पल जाना है, चलो। Didn't think I'd find something this grand. ये अपने आप ही way out एक्टिव here हो in जा the रहा है, मेन hunting स्टोरी में grounds. ये मेन स्टोरी में एक्टिवेट No हो जा sign रहा of Yuno, though. है। ओके, ये कौन सा मैप है? मैं ये पहली बार देख रहा हूँ, किस जगह का मैप है? अच्छा, ये नया मैप खुल चुका है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला, ये 4% ये हो चुका है, एक्सप्लोर हो चुका है 4%। बाकी ये कहना, ये नया मैप यहाँ पे मेंशन हो रहा है, रेनेसीटा का, हाँ मेंशन हो रहा है, नया आ चुका है यहाँ पे। और मेरा ये मार्क आ रहा है, एक चीज़ ये मार्क आ रहा है वो बाद में देखेंगे ये क्यों है, क्योंकि मैं डाला हूँ एक चीज़ के लिए, वो बाद में दिखाएंगे, जब आएगा तब दिखाएंगे वो मार्क क्यों है। डिस्क्रिप्शन में बोलने वाला मतलब ये है कि
जब मैं देख रहा था कि मेरा डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल के रखा हूँ, तो मैं सोचा कि नहीं, पहले ये अच्छा है दे देने का, क्योंकि जो खेल मतलब देखने आएंगे तो उनको एक आइडिया हो जाए कि ये सब इसके साथ हुआ था, मतलब ये गेम में इसके साथ क्या बोल रहा हूँ, गेम में ये सब हुआ था, ये इवेंट आया था, ये सब ऑब्जेक्ट ही था, ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट ये वो डाल देते तो हो जाता, लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा डालना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा डाल देंगे कि ये गेम था, ये स्टोरी लाइन था और ये ऑब्जेक्टिव था, ये कंप्लीट हो गया तो मेरा गेम स्टोरी अंदर वीडियो में क्या है वो आइडिया हो जाएगा कि ये सब है। बाकी है कि वीडियो जितना सस्पेंस रखेंगे जितना उतना ही अच्छा रहता है, बोलते हैं कि जितना वीडियो सस्पेंस है उतना अच्छा है, लेकिन मैं डाल देता हूँ, रख देता हूँ कि सस्पेंस के हिसाब से भी अच्छा है, और उसमें ये टाइम ये नहीं दिखा है, टाइम स्टैम्प नहीं है, इसलिए तो अच्छा है ना कि वो अंदर है पूरा, देखने देखेगा वो, टाइम स्टैम्प दे देंगे तो पूरा हो जाएगा पूरा। Are those murals on the wall? एक मिनट, ये क्यों है, मैं चेक करने वाला था, क्लिक हो गया। बस यहाँ पे बेसिक, अरे हाँ, अरे यार ये भी है यहाँ पे, वो भी है वहाँ पे, अच्छा दोनों साइड में है, एक यहाँ पे भी है और एक वहाँ पे भी है, और वो वाला बिल्डिंग के शायद है, हो सकता है, क्योंकि जितना भी हाई प्लेस है ना वहाँ पे रहता है, और बात करने के लिए इसके पास जाना होगा क्या, कुछ बात कर रही है, नहीं ये क्या कर रही है, प्रे कर रहे भाई, प्रे कर रहे, मैं क्या कर रहा था, और ये क्या है, एक जमींदार स्मॉल मोरल, ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि वॉरियर फाइट कर रहा है एक मॉन्स्टर के साथ, और मॉन्स्टर एक ह्यूमन के जैसा दिख रहा है, पता नहीं वो क्या है, और यहाँ पे भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे मिट चुका है, कौन सा देखेंगे, ये वाला देख लेते हैं। अच्छा, बुकलेट लाइन्स बिफोर द मुरल, रिकॉर्डिंग द फेंट इंस्क्रिप्शन, ये सब पढ़ना होगा नहीं, लेफ्ट लेफ्ट अपर लेफ्ट बॉटम, अच्छा ये देख लेते हैं क्या है, ये क्या है, फेबियस सेंटिनल इंपेटर, who work with Sentinel Imperator, prophecies, hero of heroes, okay, ओके, ये फेबियस से जो कि सेंटिनल के साथ फाइट किया था और विक्ट्री भी मिला था उसको, और ये मोमेंट मोन्यूमेंट है आर्टिलियस, हीरोज ऑफ हीरोज, फेबियस था, ये आर्टिलियस था, ये अच्छा ठीक है, हिलियोस फेबियस, और ये क्या है, वालेरिया, हीरो ऑफ हीरोज, ये भी एक हीरो है, अच्छा, लैंड ऑफ पशु ऑन मनसिप और नगर पे, थर्ड
बॉटम में कौन है? अच्छा, ये सिमिलर वो वाला सीन है जो ऑपोजिट में है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। ब्लड मोरल, ब्लड ब्लड मतलब ब्लर ब्लर हो चुका है। मिरर कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम द इट, इसको देख लिए, बाकी वहाँ पे देखना है। इट्स साइलेंट इन टाइम, दे रिमेन waiting for your case. ओके, हाँ ये हो गया। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ये कौन है? ऊपर लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट, लेफ्ट। अच्छा, एम्प्टी हॉल। टेल मी। अच्छा, इसका नाम नहीं है तो इसको ढूंढना होगा। हेवन हैज बीन ब्लैंक, ये मैसेज सीक्रेट है। शुड बी अगेन देन बी फेथ फॉर एट सेप्टिमन। ओके, ये हो गया सेकेंड, और ये थर्ड, ये भी एम्प्टी, एम्प्टी वॉल। लिव डोंट ट्रेस ऑन इट्स बर्थ स्वर। एक हुआ है और एक करना है। सेम सेम वही चीज आ रहा है अभी इसमें। नया क्या है? सेम तो वही है। मार्क आ क्यों रहा है? कुछ सीक्रेट है क्या? एग्जाम विद लार्ज मुरल, एग्जाम विद स्मॉल मुरल ऑन द अपर लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट, अपर लेफ्ट एंड राइट। एग्जाम विद लार्ज मुरल, एग्जाम विद स्मॉल मुरल्स। देखते हैं क्या कुछ हिडन क्वेस्ट बाकी है क्या। ये तो अपर लेफ्ट ही है। ये एम्प्टी है। उसके बाद राइट में जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये आ गया यहाँ पे। क्या है ये? इससे आगे क्यों नहीं जा रहा है? चल के आ रहा है ये। This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Examine the large mural, examine the small mural on the upper left and right, ऑप्शनल है। बीच का चेक करना है। लार्ज मुरल, लार्ज को ही तो चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब भी जाके ये हो रहा है। ओनली हीरो ऑफ द हीरो एक्सट्रीम पावर रीजन फ्रॉम द डार्क साइड shall bring eternity of Superman. Glory to the blood of the old king.
इनकम्प्लीट, अच्छा मोरल इनकम्प्लीट है। कुछ चीज़ बाकी है। Good day to you, Madam Rover. It seems you too have taken an interest in the temple's murals. मुझे क्यों डाउट लग रहा है कि ये कैरेक्टर बार बार क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब क्या है। स्टार्टिंग से देख रहे हैं ये इसका ही मतलब बात कर रहे हैं, ये हर वक्त आ भी जा रहा है, जब भी देखो ये ही पहुंच जा रहा है। पता नहीं ये इसका क्या चल रहा है। They are the works of past priestesses. They depict prophecies glimpsed in the sacred flames. Ones already fulfilled, and ones yet to come. In any case, all these murals point to two prophecies of importance. प्रोफेसिस क्या है वो मुझे चाहिए। The first is a Ragunasi prophecy condemning Septimon's lack of faith in the Sentinel. Hear this, O faithless ones of Septimont. The divinity of the high heavens has grown enraged. Should your monarch once more stand in contempt of their will, annihilation shall be your fate. The second is a continuation of the Ragunasi prophecy, delivered by Septimon's priestesses. Only the hero of heroes of extraordinary power, risen from the dark tides, shall bring eternity to Septimont. Then shall the waters quiet, the tempest still, and glory return with the blood of the old king. You seem drawn to that particular mural. It tells of a calamity yet to come. And, as always, the hero of heroes, who shall rise among us to turn the tide of fate. Yet the identity of this hero remains a mystery. Coincidentally, much like the absent part of this mural, the prophecy of our victory over the coming disaster remains untold. Whether the priestesses can't foresee the fate that awaits, or whether the true prophecy is meant to remain hidden, is indeed a question worth pondering. Our would-be hero of heroes lost in daydreams again. What is it this time? Staring at an empty wall, hoping one day it will bear your name? आ गई टेंशन देने वाली। I happened to wander by, passing the time as one does. No need to trouble yourself with someone as inconsequential as I, priestess. ओके यहाँ पे हो सकता है प्रीसेस, पता नहीं कैसे ये इसको मिल गई, पता नहीं। हो सकता है इसके पास पावर है जो प्रोफेसी देखने के लिए। और आविडियस हो सकता है कि वो एक रॉयल्टी है, तो हो सकता है उसको वो पावर फेम नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से प्रीस्टेस को मिल रहा है। थोड़ा जेलस होने वाला है शायद, और भी ज़्यादा। Inconsequential? Come now. Everyone knows you're the Senate's golden child. Those old loons wouldn't spare me a glance, but they hang on your every word. Have you been waiting long? Oh, I can't believe he got to you first. Isn't paying respects to the heroes fairly commonplace? Surely we needn't allow rivalry to come between us, priestess.
I'm not blind to your tricks, Avidius. Do you really think Rover would take sides with you? ओ भाई कौन सा सिचुएशन में डाल रहा है ये दोनों दोनों ही खतरनाक सिचुएशन में डाल दिए Let me guess. Eliminating Tyranos and the Dark Tide before anyone else would be the perfect act to prove you're the prophesied hero of heroes. अच्छा ये हीरोज ऑफ हीरोज का जो चल रहा है अविडियस हो सकता है वो हीरो इसलिए उसको बार बार दिखा रहे हैं और पता नहीं और कुछ है हो सकता है 4 expeditions to Main's Deep plus a home leaf medal, and now you think you can usurp Augusta's place. Don't make me laugh. और अब ये भी हो सकता है उसको पूछ लेते हैं Oh, read the room, will you? Please. I don't deny that I am ambitious and aspire to better my station, but I value my duty to defend Septimont's glory just as equally. Should I become the next hero, Septimont would be spared when the next calamity arrives. Is this not what the Tetragon Temple has prophesied? Why you... What if Augusta is the true hero of the heroes? She possesses many qualities worthy of a hero, but she lacks the extraordinary power mentioned in the prophecy. Extraordinary power already उसके पास बहुत extraordinary power है और क्या चाहिए? As a resonator, Augusta offers nothing special. Yet throughout Septimont's history, every hero of heroes was born with extraordinary gifts. She may have the strength to wield a sword, but I doubt her ability to endure pain and the slow, wearisome passage of time like other resonators. It's a pity that in a city built on prophecy, Augusta is a disruptor of the rules. अच्छा इसके इसलिए इसको गुस्सा मतलब लग रही है अगस्त के बारे में बहुत कुछ बात बोल रहे होते हैं ना तो इसलिए इसको गुस्सा आ जाती है और हो सकता है कि इसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसके साथ इसका रिलेटेड है I assure you, priestess, I will not act from the shadows. If Augusta seeks a fair challenge, I shall honor her with the respect she deserves. अच्छा Priestess, Rover, I beg your leave. Perhaps we will bear witness to the birth of a new hero in the hunt to come. Well, there you have it. That's the gist of it. Finally, some time together, and now it's all ruined. I don't understand. Given Augusta's prestige, the Senate has no real advantage in seizing power. What's their angle? मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा है इसका क्या चल रहा है It all started when Augusta shook things up the moment she became F4, especially in rooting out corruption within the gladiators' Aegon while ignoring the senators in the process. Naturally, it ruffled some feathers. Some even accused her of undermining the spirit of gladiating. In reality, they're just upset their piggy banks got smashed. More importantly, this is exactly the kind of chaos Augusta wanted. That idiot. She even went so far as to say, the citizens of Septimont only need to be loyal to Septimont, not her Augusta. And then, like it's nothing, she tells me that the F4 position only matters when a strong gladiator wants it. She's even more stubborn than I am. Are you worried about Augusta capabilities? अच्छा Now, why would I be worried about तो बहुत that? ही है
I'm sure you've seen her sword. The inlaid blades are trophies of every gladiator she's defeated. Even ones with decent resonance powers like Avidius, she eats for breakfast. तो ये क्या था? Though Avidius makes me rather uncomfortable. It's got nothing to do with his stance, it's more of a hunch. Something about him feels unnatural. Or maybe I'm just overthinking it. It's the Griffrex. It appears our prey has finally come out for some fresh air. We'll meet again later. But next time, I'd like your undivided attention. No distractions, Is that lady over there looking at me? ओ वो बोला जो प्रे कर रही थी, वही बोला। शायद गुस्सा हो गई होगी। उस समय मैं उसके पास गया था, खड़े होके देख रहा था। शायद हो सकता है। तो नहीं देखते क्या बोल रही है। Better go and greet her. I overheard a few gladiators guessing who the next hero of heroes might be. ओके। अरे नहीं यार, मैं थोड़ा स्क्रीन घुमा रहा था भाई, क्या चल रहा है। ओके ठीक है, देख लेता हूँ फिर से। I overheard a few gladiators guessing who the next hero of heroes might ओके, be. इसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट ही हुआ नहीं था, इसलिए क्लिक कर दिया बेकार। ये कहाँ चला जा रहा है? Ah. We've been expecting you, roving hero. I see. A void. An unknowable fate. अच्छा, ये फ्यूचर देख सकती है या कुछ वैसे कुछ पावर है इसके पास? Worry not, my child. A void is by no means nothingness. Follow its guidance and let it lead. It will open the path to boundless possibility, guiding us through the fog to shores untouched by any before us. Elder Priestess does not respond. Her gaze is fixed on the blazing flame. Her mind seemingly far away, lost in another realm. ये अजीब नहीं है? Perfect timing. I'll stretch my legs a bit. Huh. I wonder what Grandmother Lilibet and Rover are talking about. Never mind. It can wait. Let's get eyes on this beast, Aquila.
Spirits of the hallowed land, answer my call. May the eternal sacred flames grant us boundless sight. It's the horn. I'd better find Augusta. ओके, और एक अचीवमेंट कंप्लीट हुआ। कहाँ जाना है अभी? मीट विथ अगस्टा। तो कहाँ है? नीचे है क्या? अच्छा, वहाँ पे बैठी है, मीटिंग कर रही है। Over there. Behind that cliff is the Earthrend wedge, a relic of Sentinel Imperator as ancient as these lands. The destination of your journey, my promise to you, our shared goal. ये क्या है? An anchor stone, made from tacitite formed around the Earthrender. ओह, एंकर स्टोन, एक नया मिल गया है एंकर। It contains a fraction of the Earthrender's power. It offers no defense capabilities, but it can at least serve as a temporary measure to hold off the dark tide, or its creations. We need to deploy 3 of these in predetermined locations across Marinwood to generate a force field. This will drive the Corrosaurus to the Asphodel Barrens in the lower levels. The field blooming with asphodels is where the hunting party can safely reach the lower levels. Judging from the height, it's close to the Earthrender's base. In that field of glory, we will grant Tyranos the death it deserves. Tyranos' calling card is the vanguard of the dark tide. Our prey isn't exactly known for playing by the rules. Marinwood lies on the other side of these cliffs. That beast has reasoned we're likely to take to the skies on Griffrexes, and has laid an ambush, waiting to drag us down into the abyss. A Corrosaurus that knows how to set a trap, waiting for its hunters to walk right into it. Quite an interesting opponent. Gladiators, march with me to the hunting grounds. Let the sacred flames ignite your resolve. The enemies of Septimon shall bear witness to our might! अभी जाके सुनाई दे रहा है, इट्स वे अवेटिंग यू, वेटिंग यू, जो भी बोल सकते हैं। You okay? Let us be on our way.
अच्छा, अब इसके साथ फाइट करना होगा। ओके, क्या लिखा है? रॉसवुड पास, क्रॉस थ्रू द रॉसब्लड पास, क्रॉस थ्रू द रॉसब्लड, दोनों ही एक ही है। चलो Something's चल not कहीं जाना right. होगा क्या? Be on your guard, everyone! Stay behind me. To the lands afar. Ground is collapsing! Watch out! अरे यार बहुत जल्दी हो गया। Stay behind me. Over there! Getting excited, are we, Tyranos? Watch out for those molten rocks. Use the pillars for cover. Move! Cunning bastard. Oh, we're almost at Hogsing. Victory is still far from reach. We're not in the clear yet. Rocks above! भाई कहाँ गए? पीछे ही तो थे। This path will take us to the Tacit discords. just in time. My swords had enough of waiting. Good? The wicked will face judgment. Hopefully this helps. Hopefully this helps. Such carnage. These tricks do not surprise me. Avidius, take a response team and get that anchor obelisk functioning. Rover and I will provide cover. As you command, Your Excellency. Honor cannot be sullied. In control. In control.
अरे 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 अरे, क्या हो गया? Hopefully this helps. The wicked will face judgment. Avidius' team should be almost done, Augusta. I'll head over to join them. Of course. See that it's done. मुझे नहीं लग रहा था कि वो खत्म हो जाएगी इतने जल्दी। इतना तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे हो गई। Your aid couldn't have come at a better time. We were just about to insert the anchor stone into the obelisk. ओके, मुझे वैसे दिख भी रहा था कि वैसे कुछ करना है, कोस्टर को वहाँ पे इंसर्ट करना है, उसके बाद वो ये एक्टिवेट होगा, तो कर लेते हैं एक्टिवेट। ब्लैक ब्लैक Excellent work, all. Inside these hunting grounds, the hunter can become the hunted at a moment's notice. Think that beast is running away? Just a trick to throw us off. Let Augusta humor its little performance. Beasts who think they've won are always the first to die. Let her handle the Corrosaurus for now. We have more important matters to take care of. What bring you here? You know. ये तो आने वाली है। ये कहाँ जाएगी? स्टोरी चल रहा है। Oh, surprised to see me? I've already shared my interest with you. It wouldn't kill you to remember a few things I've said, would it? But fine. Since it's you, I suppose I can let you in on the secret. The Corrosaurus is just an appetizer. I've got bigger fish to fry. Root anchor fist. ये एक अच्छी एनिमेशन थी एंकर फिश का। यहाँ पे कुछ वैसे कुछ आइटम मिल जाए जो कि मुझे बाद में लेना है, वो देख रहा हूँ। वैसे कुछ नहीं है, चलो। अच्छा, यहाँ पे कुछ मुझे मिल रहा है। ये क्या है? कुछ इफेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसका कुछ एनर्जी यहाँ पे छोड़ दिया है। The next anchor obelisk is on the other side of the plateau. Ah, impeccable timing, my dear priestess. Wing rays are here too, huh?
Does that surprise you? Augusta and I prepared it all well in advance. Ride the winds and let's soar over these cliffs together. एक मिनट, कहाँ जाना है मुझे? We've lost sight of Augusta and the Corrosaurus. Let me see your terminal, Rover. There. Try using the sensor. You catch on quickly. My resonance power can reveal hidden traces of the dark tide for a short time. With these markings, be it Tyranos or Tyran whatever, nothing can escape my eyes. Yes, you're not wrong, but the beast also has its eye on them. A sly enemy like this won't play by the usual rules. The more cautious we are, the better. Ha! So it is heading for that cave. The second obelisk is also in that direction. Come, let's go have a little fun with our friend. यहाँ पे ये कुछ तो करना होगा इसको। देख लेते हैं। ओके, ये एक्टिव हो रहा है। इसको यहाँ पे जाके एक्टिव करना होता है। ओके, This is it. The second obelisk should be at the other end of this cave. आप पहुँच के ये करना होगा, नहीं तो नहीं हो रहा है। एंटर द केव। अच्छा, एंटर नहीं करना है ना। Mind the tacit discords. I'd be more worried about yourself, would you, hero? Try not to slow us down. Hopefully this helps. अरे जंप ही क्यों कर रहा है? मुझे अभी लोपा तो चाहिए ही चाहिए। अरे अरे यार, Hopefully this helps. Watch out! How did it manage to get here? There's an opening in the floor. That's our way out. हेड टू द अंडरग्राउंड। मेरा कैरेक्टर क्या करे अभी? कैरेक्टर का उसको कर लेते हैं, कुछ रिवाइव हो सकते हैं तो कर लेते हैं। रिवाइव नहीं होगा शायद, नहीं होगा, नहीं होगा अभी, ये गेम के अंदर ही है। और दूसरी तरफ वो जा भी नहीं सकते। चलो कूद जाते हैं। अरे यार, अच्छा मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। I'll keep it busy. Now is your chance. Go! Make no mistake! Your fight is with me!
Augusta. My apologies for the delay. Be warned, the Corrosaurus could return at any moment. We should leave. अच्छा ये वाला तो पाथ ब्लॉक हो चुका है, यहाँ पे कुछ मिल सकता है कि देखते हैं, और ये बंद है। Stay behind me. Nice trophy. पाथ कोई आ गया। Here it comes. These formations seem solid enough for a quick pause. Tyranos will not rest until we are corpses. But since it hasn't shown itself yet, we should use this moment. Up there to the left. That stone seems loose. Pull it down, Rover. Stay behind me. Honor cannot be sullied. Character change. Keep it together. Last chance. Last chance. Fight by my side. Scene of my triumph. Roars of conquest. It's the obelisk. Leave it to me. ओके, रोवर का हेल्थ पूरा डाउन। Annihilation. Wind rises. Tempest of flashes. Purging all evil. Wind rises. ओके, ये हो गया। अभी इसका कर लेते हैं। Splendid. Let's keep up the momentum. You again. सेम है ना। स्कोर का क्या है? अच्छा, वहां से आए थे।
It just left. Should be the anchor obelisk doing its job. Or perhaps it's up to something more insidious. ओके, शील्ड मिल गया। अभी लूपा को भी बचा लेंगे। The direction it's heading. Is it planning to destroy the final anchor obelisk? Persist this fog. Hinders our vision. We could be walking into a trap. Makes for a fun challenge. Don't you agree, Avidius? Stay vigilant. In due time, Tyranos will learn that Leonidas was always in control. The obelisk is right over there. Remnants of the past. ये पूरा एरिया ब्लूबल है। एक चीज मुझे करना है, यहाँ पे जो एक ऑप्शन दे रहा है क्लिक करने का, वो सर्कल पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ। पहले क्लिक कर सकता हूँ कि नहीं वो देख देता हूँ। क्लिक करो। Good. You did well not to disappoint. ओके, वो उसको देखेंगे। एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ ग्राफिक्स का क्या इशू है चल रहा है। बहुत चीज़ें जो कि स्पेशल इफेक्ट क्वालिटी इसको कम कर लेते, शायद हो सकता है उसके लिए हो रहा हो। इसको भी थोड़ा कम कर लेते, सारा क्वालिटी को लो ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। बाकी ये सब ठीक ही है। क्राउड डेंसिटी मीडियम ही है, ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब यहाँ पे भी ठीक ही है। क्वालिटी रखे, इसको कम कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। अभी जितना है ठीक ही है। Augusta, Tyranos is heading for the Asphodel Barrens. The net has been cast. It's time to reel in the prize. ये पूरा मतलब क्या है, क्वेस्ट है हंटिंग का। अभी के लिए हंटिंग चल रहा है, इसका स्टोरी अभी हुआ नहीं। हंटिंग है तो हो सकता है और भी ज़्यादा स्टोरी लगेगा। Head to the Asphodel Barren। कहाँ जाना है वो? मार्क कहाँ है? नीचे।
ओके, तो डायरेक्ट जा सकते। ले ले। फाइटिंग ग्राउंड, ये A field of corpses. कब का है भाई? Horrifying, isn't it? तो भाई ये क्या है, क्या भाई, ये बहुत खतरनाक सीन है। This is Tyranos' birthplace. A kingdom of brutality, and the beast is proud of it. Every hunt before this, it was here that we met our final battles. The gladiators went to great lengths to drive the Dark Tide's creatures into the Asphodel Barrens. Likewise, their prey were just as eager to bait their hunters here. This is destined to be an evenly matched game of life and death. Hunter or prey. Only the one still standing gets to decide. Avidius, descendant of the hero of heroes Attilius, decorated for the 4 crossings of Main's Deep. I see the desire in you, your desire for power. Yet if you wish to be my opponent, then this level of resolve is far from enough. Step forward. Stand next to me and pursue your desires without hesitation. Let your ambitions burn even hotter. As you wish, Your Excellency. Finally, some fun for a change. Come, you need only to stay at my side, Rover. Rest. This is a matter between Augusta and Avidius. We shall not intervene for the time being. Leave it to me.
is in place. It will take the bait. That's our cue. We're going after it. All this effort we've put into setting this trap. This gift of ours, if they're to take it, nice and obediently. Over there. Stay behind me. What was that? Now. What was that about? And that black fog? It was all mushy. I couldn't even finish it. आ गया या खाने के लिए इसको रखा है स्पेशल फूड के लिए जितना भी पावर है ऑब्जर्व करने के लिए और कुछ नहीं Ooh, oh boy. Did I take a huge bite out of that one? My head's gone all swishy. I need a quick timeout. How are you holding up?
Resist the gift of divinity. Follow our guidance. Return to Murmurstown. To your home. Augusta. Augusta. If, and I say, if Septimon's fate has already been decided, would you continue to fight? A ruler assumes their place by accomplishing the impossible for their subjects. It isn't safe here. I'll lead a team and escort everyone to a temporary camp not far from here. But before that, I must ensure no one is left behind. You go ahead, Rover. I am entrusting Yuno to your care. How are you feeling? Do you want to rest a bit? I appreciate your concern, but I'm not as fragile as you think. This road is nothing I can't handle. यहाँ से थोड़ा मुझे लग रहा है कि स्टोरी थोड़ा सैड पैड में जा रहा है। Today's story is थोड़ा तो सैड होने वाला है स्टोरी, लेकिन क्या करे, ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट। तो अभी कितने दूर तक चल रहा है वो है, जितना भी अभी मेन कैरेक्टर जो भी दे रहा है ना, उसका अभी देखने वाले हैं क्या चल रहा है। अभी उन का भी चल रहा है, अभी अगस्त भी चल रहा है, दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। और उसका मतलब इन दोनों का फेथ एक साथ ही चल रहा है। बैठना है अभी यहाँ पे कैंप में। You can set me down here. Come on, don't give me that concerned look of yours. It's nothing to worry about. Wait. You have questions. Don't pretend you don't. Well, spit it out. It's only a minor injury. I can manage. I saw you fall into dark tide. I saw the moment Augusta death. I saw destruction of Septima. Augusta डेथ तो नहीं दिखे, तो डिस्ट्रक्शन ये बोल सकते हैं। So you've managed to glimpse that far? Or is there more?
Just how many more surprises do you have for me? But I suppose only you could manage something like that. Grandmother Lilibet, the head priestess you met at the temple, once spoke of the unknowable void that is your fate. Unknowable void. I've yet to fully interpret what she meant by that, but one thing is clear. You are the most unique among us all. What are those visions? Future है या They predictable were, है? as I once perceived through the sacred flames, the fate of Septimont. Just as you saw, the dark tide will bring destruction to Septimont and the death of Augusta. I don't know whether Raguna's predictions are actually true, but fate has given me no response but sorrow. Though I would deny it to the end, as it is now, I cannot ignore it any longer. The dark tide is a force to be reckoned with. Its terror lies not in the illusions it shows or the lies it spins. Rather, it uncovers the parts of us we hide the most carefully, the parts of ourselves we least wish to face. And if the faith you glimpse turn out to be false, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. Never. My prophecies are never wrong. अच्छा, तो सही हो सकता है. How I loathe this feeling. This helplessness. To know everything, to see everything, and yet be powerless to change a thing. Since we've come this far, might as well share a secret with you. Do you know you see before you can no longer see the threads of fate? I gave up my ability to peer into fate in exchange for the resonance power to resist the dark tide. Why? Because I refused to be fate's obedient puppet, bowing to its whims and letting it dictate my every step. But in the end, despite all the sacrifice, we still couldn't escape its grasp. The dark figure we faced in Asphodel Barrens was, in fact, an embodiment of the dark tide. We call it the false sovereign. Unlike other dark tide creations, it can devour and reshape the scattered powers of its maker. I'm unclear how things will unfold, but I'm certain it's the source of evil that will bring about the fall of Septimont, just as the prophecy foretold. Before this hunt, Augusta and I investigated such dark tide irregularities at the Sanguis Plateaus. We then formed a plan to take advantage of the Sovereign's nature, using the Corrosaurus as bait to lure out its imperfect form. Maybe this way we can rewrite Septimont's tragedy before it even begins. But as you can see, we failed. Is there really no way to alter faith and the prophecy? वो अभी बोलने वाला था कि चेंज कर सकते हैं या नहीं. I do not know. मतलब इसके साथ जो भी हुआ है अभी तक वो ट्राई भी नहीं की होगी चेंज करने का. शायद की होगी, लेकिन हो सकता है कभी वो फेथ चेंज नहीं हुआ होगा, इसलिए. Fate doesn't lie. Perhaps death is the only choice we're given in the end. But knowing Augusta, I'm sure that fool would fight till the bitter end. There is one thing I'm not certain about. For reasons I can't explain,
the fate shown to me by the Dark Tide feels different from what I remember. What is it exactly? Your arm. A side effect of my resonance power. The Dark Tide doesn't exactly show up in a stable form. My powers manifest its creations in exchange for a teensy piece of my existence. That's the price to pay, I suppose. I admit it sounds a bit complicated. In short, just know a little sleep will relieve these side effects. Understanding the situation will really take time. Until then, focus on resting and getting better. A fair point. Once I've recovered my strength, sorting out these questions will be as simple as a flick of a finger. Oh, by the way, take this. इसका ये ornament था या कुछ बोल सकते हैं कि weapon बोल सकते हैं, पता नहीं क्या है, weapon जैसे ही लग रहा है. A lunarum bracelet containing a small portion of my resonance power. It was passed down to me by my predecessor when I became a priestess. अच्छा, तो ये कुछ weapon जैसा ही है. It's quite dear to me, you know, so be sure to take extra good care of it. And don't expect there'll be a spare if you lose it. Rely on it in my absence. Who knows? It may even help fill in for me and help you and Augusta in my place. Thank you. Now, why would you say that? I'll only be taking a short nap. Don't you or Augusta even dare think about leaving me behind, is that clear? I should see how things are with Augusta now. Okay, अभी ये बैग में क्या है वो देख लेता हूँ. इसका क्या होता है? अच्छा, तो you may draw opponent strength to reveal the dark type creations. ठीक है, वैसे कुछ है तो कल देख लेते हैं. और पहले किसे पूछे? कि तो Avidius ऑप्शनल है. Head to the main tent and find Augusta. Avidius को पूछ लेते पहले. The situation we're currently facing is more dire than any I've come across. For the sake of Septimont, I must momentarily set aside my quest for power. Ask about the event. You want to mention the Tetragram temple. My 4 expeditions to Main's Deep. Now may not be the best time to discuss past events, but if you insist. It dates back to a high tide 4 years ago. At the time, we were driven by the fury of the Dark Tide into the lower levels of the hunting grounds, the wastelands. I had no intention of emulating the feats of the 3 Hero of Heroes in conquering Main's Deep. But with the Dark Tide's blockade, I had to lead repeated expeditions into those underground ruins. Fortune, however, did not turn its back on us. In that dark and treacherous place, my companions and I managed to carve out a path to survival. Fate has its ways.
Now only I remain able to face the hunting grounds trials. Many of my companions fell to the corruption of the Dark Tide. Those left barely overcame the Dark Tide's influence with the help of a plant unique to Main's Deep, Mizona. Even so, they still suffered from the torment it caused and were forced to cut their time as gladiators short. This home leaf medal was granted to me by the former Ephor after the crisis. A victory, yes, but one laced with pain. My companions should never have suffered the Dark Tide's disgrace. ओके, ये हो गया इसके साथ। इसको पूछ रहे थे, इसका भी मार्क आ रहा है तो पूछ रहे थे क्या है। बट फीलिंग अबाउट दिस वन क्या है? आई जस्ट वांट टू लास्ट सी फॉर द हेडफोन, नॉट श्योर विल मेक इट बैक। हैंड अप द बॉटल ऑफ हार्ड पोर। अच्छा, डोंट हैंड इट अपर। यहाँ पे कोई वैसे है जो कि बात कर सकता है? नहीं, यहाँ पे कोई वैसे नहीं है। Weapons tight. Always be ready for anything. With a dark tide upon us, the time has come for you to prove your valor in combat. ओके, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है। ये यहाँ पे मीटिंग चल रहा है, देख लेते हैं। Messages have been sent to the encampment and all sectors of the main island, and defenses are currently being deployed per your instructions, Your Excellency. Good. Ensure timely reports on any new developments. Yes, Your Excellency. Hard thing playing out here. I've made arrangements for the war effort. Strategically, we must always brace ourselves for the worst. Communications with the Black Shores are also underway. अच्छा, वहां से भी कनेक्टिंग चल रहा है। The Ephor's palace has previously established a connection with a consultant in the Rinascita region. We've reached an agreement granting the Black Shores permission to access Septimon's resonance nexus. They'll be able to monitor and collect data on the Dark Tide during the hunt. In return, should any complications arise, the Black Shores are to fulfill their side of the agreement and provide us with the necessary technical support. A consultant active in Renacita? That's right. Her name is Buling. An interesting young lady. Left quite an impression on me. बहुत सारा बाकी है लग रहा है। अभी तक 3 घंटा हो गया, शायद 3 घंटा नहीं हुआ है, और भी है बाकी। 3 घंटा तक चल रहा था, मतलब चलता है, तो उसी हिसाब से तो आधा तक हो चुका है शायद, लग रहा है।
और कितना ऑब्जेक्टिव बाकी है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बाकी है शायद। So it is her. Why don't you let me handle contacting the Black Shores, Augusta? We talk from time to time. It'll help make things smoother for us. Of course. I'll leave it to you then. Contact bullying. ये कौन है? Alright, I think I got the whole picture now. Ugh, Rover, how do you keep ending up in messes like this? This is one tough cookie, alright. You mean... Let me tell you, the latest data we got from the Resonance Nexus isn't so pretty. Something's really off with the dark tide in that Sanguis place. I don't remember it being this crazy before. Normally, the dark tide getting all freaky during high tide is whatever, right? But now, I don't know what happened, 'cause it's turning into a person. So listen up. I'll give you Tethys' rundown. That humanoid thing, that sovereign, is gobbling up frequencies like a maniac. Humanoid thing. अच्छा. It's eating anything with energy. Dark tide stuff, tacit discords, echoes, you name it. Might even be saving other things for dessert. Basically, the Sovereign isn't gonna attack Septimon or Raguna anytime soon. It's too busy getting fat first. Once it's stuffed full of energy, it'll try and smash the Earthrend wedge in one go. With the Earthrender gone, poof! All that dark tide under the hunting grounds will explode like a pimple. When that happens, it's game over for Renacita. Even if you have 3 heads and 6 arms, it will be bye-bye. Mention Augusta and Eunice plan. Very cool, but once share with you plans he had Augusta devised to hunt down the Severin. So that plan has been since failed. You relay the detail of the detail to the bully, backed by Augusta's permit. But smooth moves, team. Cutting through the clutter, I see what you're doing. This Corrosaurus is just the bait to hook the big fish, isn't it? Your real plan is to stop the Sovereign before it fully forms. Nip it in the bud. Am I right, boss? You are right on the mark. Heaven and earth are in harmony. That's my reading, so your plan shouldn't have fallen apart like that. But then again, smooth sailing isn't always a good thing either. Too much harmony invites trouble. Tempest did pick up a strange frequency midway through the hunt. Everything was fine until that frequency came out of nowhere. And then suddenly the Sovereign took form way ahead of schedule. Talk about flipping the table. Can you trace frequency back to its source? Well, let me get another reading. Oh, the cheese all messed up. It's kind of hard to see. It's like someone clouded the heavenly signs on purpose. One way or another, we must find the Sovereign and stop it before it absorbs any more frequencies. This might be our only option for now. That's right.
Supernatural powers or not, the Sovereign can't escape good old Tethys. Let me see. Yup. It's wandering in an area with a whole lot of other frequencies. Looks like it's east of the Sanguis Plateaus. Yeah, that place has lots of dark energy. Bet many tough people died there. Murmurstown. Understood. I will stop it in its tracks. If Sovereign want to destroy the Earth render, I can't let this happen. Under the oath of the hunt, I'll ride alongside you with every variant. इसको बोल देते हैं. Your Excellency. With your permission, I wish to accompany you to Murmurstown. I know this request may seem bold, and I'm aware of the dangers ahead. But as a warrior of Septimont, I cannot simply stand by. Gladiators! We are united as defenders of Septimont's honor. I do not claim the right to ask this of you. But in my heart, I believe everyone here has earned the glory we bear. Let our deeds today reflect that greatness. He's right. He's right. Septimont needs us. That's a good point. We have to fight. Yeah. Get up. Yeah. Go for it. Well said, young man. Gladiators of Septimont fear no challenge. When the storm approaches, can an eagle soaring in the skies remain content as a fledgling beneath another's wings? अभी जो whispering था वो पहले का था या बाद के था पता नहीं चला कि वो समय तो ये बात कर रहा था ना उस समय एक साथ थोड़ा लग रहा था कि हाँ बात कर रहे हैं अभी का भी लेकिन पता नहीं ये थोड़ा अजीब था वो. Your Excellency, we will follow you anywhere. Very well. You have sworn your allegiance to Septimont with your resolve. Your bravery is witnessed not only by me, but by the fallen heroes lying in Capitolini Hill. They take pride in your courage. If you wish to fight together, then so be it. I will afford your fervor its due respect. Come, take up your blades. For Septimont! For the name of heroes eternal! The wise choice, Augusta. It is time. Return to where you belong. Far beyond the last long awaited your homecoming. Murmurstown sits atop the wastelands, below the hunting grounds. It has since become a forbidden territory, after the Dark Tide's corruption 16 years ago. Follow me. The Wingray can give us a lift. Avidius, ready the anchor stones. We must set up a defense line around Murmurstown. It shall be done, Your Excellency. Wind guide me. The wastelands.
ओके, ये ये क्या हो गया था यहाँ पे? ये सब क्या है? पूरा पूरा सब कुछ मेल्ट हो चुका है और ये मुझे पता नहीं लग रहा है ये क्या है, ये सब क्या है? जैसे कोई किसका सिर है, ये सब जैसे ही कुछ लग रहा है। मॉन्स्टर का सिर है, ये पता नहीं क्या है, लेकिन जैसे लग रहा है कि मेल्ट हो चुका है। बिल्डिंग तो मेल्ट हो चुका है, पता नहीं क्या है। I never imagined that after 4 years I would return to this place under such circumstances. 4 ईयर पहले क्या हुआ था ऐसे कुछ? How did this place get like this? और इसका चेहरा तो मुझे लग रहा है कि अभी सो के उठा है। This is where the dark tide started 16 years ago. The fact that this empty shell still stands is a miracle in itself. 16 years ago बोल रहा है भाई, ये तो 4 ईयर पहले क्या हुआ था? 16 पहले ईयर क्या होता पता नहीं चल रहा है। Does this mean if we fail to stop the dark tide, Septimont too will... It's terrible. Oh no. That's horrible. No. हाँ, यहाँ पे एक चीज हुआ था ना, 16 इयर्स पहले हुआ था, अगस्टा के होम टाउन में ऐसे कुछ हुआ था, जिसके वजह से अगस्टा सेप्टिमन आ गई थी और वहां पे जाके ट्रेनिंग लेके एक वॉरियर बनी और उसके बाद एक शायद हो सकता है कि रूलर। 16 इयर्स पहले का जो सीन बोल रहे हैं, ये है वो सीन, मतलब जो जहाँ पे अगस्टा का जन्म हुआ था, मतलब बर्थ प्लेस बोल सकते हैं। Warriors, do not let fear stand in our way. The untarnished glory of Septimont stands behind us. The devastation that befell Murmurstown 16 years ago will never be repeated. Because now, we are here. What is our plan of action? क्या है? The Sovereign won't make things easy for us. Any rash action before we can confirm its location and status would be unwise. Your command is our duty, Your Excellency. We will deploy anchor stones around Murmurstown, and I'll personally see that the perimeter stays undisturbed. Yes. This will trap Sovereign inside the town. Good. Proceed as planned, Avidius. 3 घंटा हो चुका है, ब्रेक लेना है। ये मुझे सिर्फ लग रहा था मोबाइल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी दे रहा है, पता नहीं ये ऐसा गेम का वजह से हो रहा है या मोबाइल में ऐसा ऑप्शन था इसलिए आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। Now then. It falls to us to track down the Sovereign's whereabouts, Rover. Time is short, so we'll need to split up. Split out? क्यों? 3 घंटा पहले, अच्छा ठीक है, जान गया, और कुछ नहीं चाहिए। Keep your guard up! Those hollow figures do not be fooled by their stillness. Those are just the shell. And watch for their songs of corruption. Hollow figures? They were once our own. Brave gladiators, loyal citizens of Septimont. The dark tide not only twisted their minds, it also raised their corpses and turned them into mindless puppets. Not even death could set them free. Mark my words. It will pay for this malevolence. You take the upper area, Rover. I'll take the lower one. अरे यार, ये क्यों If you बीच में आ गया अभी? spot any signs of the Sovereign or run into trouble, let me know right away.
अच्छा, यहाँ पे ये कैंप लगा के बैठ गए भाई यार। तुम लोग तो आराम से बैठ जा रहे हो, मुझे ही करना पड़ रहा है सब कुछ। चलो, हेड डीपर इन द मर्मर स्टॉर्म, स्टोन। चलो फिर घूम के आते हैं। भाई ये क्या था? भाई यार ये सीन तो गजब है। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही स्टैचू बन गए। तो भाई ये क्या है? This place is too quiet. No trace of the Sovereign anyway. Hey, Buling, can you help me track down the Sovereign? You got it. Give me a sec to scan things. Sorry, boss. The frequencies around you are all over the place. I can't get a clear reading. This Sovereign's a slippery eel, eating up every little frequency like it's popcorn. Now the Tempest system's got nothing to work with. It's playing hide and seek with us on purpose. ओके, अभी ये काम कर सकता है। ब्रेसलेट जो दिया था वो काम कर सकता है। Hold on. What if you bring me some pure dark tide frequency samples? Maybe Tethys can use it to track down something with a similar frequency, like the Sovereign itself or the original dark tide. Could give you a better lead. Understood. I'll do what I can. Abby? Abby, wake up. What's going on? Ugh, I'm so sleepy. Ugh, that dark spooky stuff I ate earlier is still gurgling in my belly. Sorry to hear that. But if my clever, brave, stylish, and sweet Abby could help me out, that'd be amazing. Aw, you're making me blush. Okay. Your best buddy Abby's on the job. Go on. So, that thing we tangled with before has gone into hiding around here. I need your help to sniff it out. Yeah, easy peasy. You know I have a good nose for searching. Find anything? The whole place smells like a dumpster fire. And that monster, I can't tell where it is exactly. The scent's all muddled. There's something weird over there. Statue? Is that a Waystone? I've seen those back in Septimont City. They're like signposts for Outlanders. साइन पोस्ट पर आउटलैंडर्स, मतलब ये रोवर के जैसा जो भी आएगा। All right, let's check it out. मतलब आउटसाइड सिटी के बाहर जो रहते हैं। साउंड कुछ तो आ रहा है, विस्पर जैसे कुछ साउंड आ रहा है। Yep, this is it. Its right arm is missing.
Isn't it supposed to be pointing in that direction? I guess. It wouldn't be a Waystone if it didn't show the way, right? Hey! Something just flew by that way! It's that muddled scent again! Come on! We gotta catch it! कोई गाना गा रहा है क्या? Look! It stopped over there! कहाँ पे? ओ भाई ये भयानक है भाई। It's gone. Is it hiding among those strange statues over there? Wait, are they singing? They must be the hollow figures Augusta mentioned. And that song. Hollow figure. No. I can't get any closer. Maybe I can split off the Dark Tide's influence. Under their guidance, gaze upon the beyond, glorious seater, a warm, tender the high heavens, the holy realm. Light dot will sleeping her। अच्छा तो उसके बाद इसको क्या करना है? एक्सप्लोर। अच्छा समनिंग। ये अच्छा नहीं है। Hopefully this helps. Nope. That troublemaker's off again. Annihilation. Hopefully this helps. Hopefully this helps. The wicked will face judgment. Wind rises. Now it's hiding inside a tacit discord? Boo! Don't worry, we'll flush it out. I am the Tempest! Hopefully this helps. Bad timing. अरे यार पॉज हो गया क्यों? Hopefully this helps.
one more time. Great. Now it's found another one to cling to. It's making that tacit discord even stronger. We should handle the other scrolls. We'll face done. Your hide and seek game is over. Time to finish it. Wind howls, unfettered by bounds. अरे यार ये ऐसे क्यों भाग रहा है ये? लाइट स्पार्क इन्वेस्टिगेट करो भाई। ये मास्क है या कुछ ऐसे कुछ? A piece of cloth. क्लॉथ। Looks like something from a gladiator's gear. But why here? His frequency is something else. Is it that same muddled scent you mentioned before? Well, it's got a bit of that smell, but the fabric's frequency is even stronger. It's not giving in. Kinda like a brave gladiator fighting a monster. I see. That Waystone with the missing right arm had a sleeve that was torn. Why don't we take it to the statue? Maybe it will unlock the next clue. The legend, the unending tragedy of your people, is that not your true desire? And yet, you've made a fragile mortal, unworthy of the greatness you seek. How can such a weak soul claim its place among the gods? Deny it not, sweet child. Your heart is bare to us. Take one more step. Grasp it. Feel it. Embrace it. Awaken this power through your forte. Unshed the weakness of your pitiful shell. Rather than earned, could never truly be mine. If this power strips me of my will, how can I be sure where my sword will strike? I reject such a gift. Augusta, I've got a lead. Location's on your terminal. I'll wait for you there. Copy. On my way.
इसको अभी दे देंगे डिलीवरी। इसका कुछ है शायद, मेंशन है, देख लेते हैं। अच्छा, इसका हाथ आ गया। अभी कुछ होने वाला है क्या? The clash of battles long past is proof of my unyielding will. Undying gladiator spirit. Travelers who have braved the path, press onward. Step into the dark, where forsaken truths and forgotten words slumber. This is a Sonoro! Ah, the muddled smell makes sense now. A gladiator who fought the dark tide in Murmurstown to his last breath. His frequency still lingers to carry on the fight. सोनर स्पीयर कहाँ पे खुला है शायद? Thank you for showing us the way ahead. Augusta, over here. Is this a Sonoro? It's a bit more complicated than that. All right, time for Abby's rundown. So, Rover and I were tracking that shadowy monster fella. And I followed its scent right to, this Sonoro. Well, kinda. It's not the exact same scent, it's just really close. It's also kinda muddled. Right. The frequencies the Black Shores detected in both Murmurstown and from the Sovereign are unusually complex. To track the Sovereign, we'll need to help by isolating a pure dark tide frequency. सोनोरो मतलब अभी सोनर स्पीयर खुलेगा कहीं पे, और शायद हो सकता है वो जो सॉवरेन है उसको डिफीट करना है शायद। I wasn't sure where to start, but Abby's been a big help. Don't mention it. Easy peasy lemon squeezy. I assume this is your echo friend, who saved us in the Asphodel Barrens. You have my gratitude. No biggie. You don't seem surprised. The level of power it showed is indeed questionable for an echo. But I trust it, as much as I trust you. No need for explanations between allies. Did you hear that? Through me walk the path of glorious ascension. Through me enter the city of eternal bliss. Yet all who enter must first forsake all hope? Sounds like a song. Those lyrics are pretty intense, though. Sonoro, what do you want to show us? Let's enter it. Enter the Sonoro. इसको एज में देखेंगे क्या? अच्छा, ये है interact with the Waystone to enter or exit Sonoro at any time. अच्छा, तो ये एंटर होने का एक गेट है। एंटर सोनर स्पीयर। अच्छा, ये वैसे सोनर स्पीयर कुछ मतलब सर्कल जैसा होता है, लेकिन ये स्टैचू है। हो गया एंटर। ओ भाई, न्यू टाउन।
Are we still in Murmurstown? शायद ये पास्ट का है। No. There are small differences. This is Murmurstown, only from the past. हाँ वही लग रहा था क्योंकि अभी वो टाउन नहीं है ना। It was once called Fabianum, the town of gladiators, visited by Fabius, the hero of heroes. But Fabius, हाँ Fabius the पहले dark सुना tide हुआ था। claimed it in the end, leaving behind a scar Septimont will never forget. Augusta, look over there. Are those lingering frequencies from the past? Let's follow them. It might lead us to more answers. I didn't see you by the Oak Hollow today. You promised we'd go explore Main's Deep together. Don't tell me you got roped into errands again. एक मिनट, ये दोनों का वॉइस जो भी हो, मुझे लग रहा है कि एक अगस्ता है और इन यूनो है शायद। Sorry. फेमिलियर साउंडिंग गर्ल। Otto got hurt and Uncle Philo shot on help at the shop, so I volunteered. But I lost track of time. लिंगरिंग सॉल तो नहीं है, पता नहीं, हो सकता है, हो सकता है। एंजेलिका या एंजेला जो भी है वो मतलब उसका माइंड में चल रहा था, देख ही रही थी, तो हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई है। All right. ये हो सकता है ये, और ये पोनीटेल पता नहीं, पोनीटेल तो नहीं है, Always come asking you for रैबिट या टेल, help. We're children after all. जो भी बोल सकते हैं, रैबिट ईयर। I don't know. Me neither. I guess it is high tide season. Uncle Philo must be busy at his forge. Even Ma and Pa are busy preparing for the hunt. If only we could find our way to Main's Deep. Maybe we'd hear the hero of heroes whispers and gain a mighty resonance, just like in Grandma Rosa's stories. If I were strong enough to join the hunt, maybe Ma and Pa wouldn't have to work themselves to the bone. You're strong to me, Angel. एंजल वही चीज है। Sometimes I wish I could be as strong as you. I don't think I've ever had your gifts. Father always said, you swing a sword fine enough, but your resonance ability is average at best. Not gladiator material. Average? I don't believe that for a second. Come on, let me see your hand. Your tacet mark's there, right? Hey, why are you hesitating? Show me. This is... I'm going to Uncle Philo. This is obviously from his forge burning you. This is obvious from his forge warning you. It's not his fault. I was just being careless. I asked to borrow some of his old rusty swords, and if I worked fast enough, he'd let me. Grandma Rosa said you need 2 lives to reach Main's Deep. We don't have our swords yet. We're missing a life, so I thought if I could get us some... not this again. You really can be a handful sometimes. Reverberation from the past. Soul नहीं है. Yes, 16 years ago. Right before the dark tide hit. Huh? There's that
floating thing again. I think it's trying to lead the way for us this time. We should follow it. It's hovering by those phantoms. अभी इनका बात सुनना पड़ेगा. There you are. I was looking everywhere for you. Here, take some of these candies. Grandma Rosa gave them to us. Hey, do you think what Grandma Rosa said about Main's Deep is real? Like, if I really had the hero of heroes whisper in Okollo, do you think I could ask them to fix my brother's leg? With a resonance ability that powerful, maybe he could get better, just like how he was. The grown-ups keep saying how awful this dark tide will be. And my brother's leg, it won't heal. They said he'll never be a gladiator now. In that case, why not try your luck in Oak Hollow? You can take my sword. Just make sure to bring it back to Uncle Philo later. But aren't you coming too? There's no extra sword. You can't reach Main's Deep without your sword. It's okay. I'll wait till next time. I'll find a way to get more swords, so everyone can have one. That little girl. Does her voice sound familiar to you? I feel like I've heard it somewhere before. Look, there is a garden behind the building. We've got no other leads for now. Let's check it out. More phantoms of the past. फैंटम, ये सब फैंटम है. तो इन ये सब तक कोई भी जिंदा नहीं होंगे, कोई भी. तो अभी का ये जो फेमिलियर वॉइस है, ये पता नहीं फैंटम है या नहीं, कभी-कभी पता नहीं चलता है इन लोगों का. हो भी सकते, नहीं भी हो सकते. Listen. It's cutting out. I can't hear what it's saying. Rover, that floating thing. Seems like it's distracted. Something's messing with it, but I can't see what. Feels like, I don't know, like there's an invisible wall cutting us off. Another Waystone. That can't be just a coincidence. ये हो सकता है सोनर स्पीयर के अंदर और एक सोनर स्पीयर. ये हो सकता है कि वो टीडी जो है वहाँ पे एंटर करने का शायद हो सकता है. It led us into the Sonoro. Maybe it can lead us out. हाँ, ये भी हो सकता है. बाहर जाने का रोड भी हो सकता है, क्योंकि ये एंटर और बाहर जाने का गेट है. You're saying we should use it to leave the Sonoro, and that whatever's messing with us might be coming from outside. हो सकता है. Could be. It's worth trying. गेट तो बंद है, गेट खोल भी नहीं सकता, और यहाँ पे वैसे कुछ है भी नहीं. वैसे कुछ नहीं भी नहीं है. चलो एंटर करते हैं, लीव करते हैं.
Can't believe we actually made it out. ओ भाई यार, ये खत्म नहीं हुआ अभी तक। साउंड तो आ रहा है। More hollow figures. Really was that. Don't worry. Leave them to me. In control. साउंड यहाँ से बहुत ज्यादा इको हो रहा है। Wind rises. इसको क्या करना है? तोड़ना है क्या? Shatter the hollow figure and free the light spark. This should work. All right, team. Let's head back to the Sonoro. अच्छा, यहाँ से ओके, तो ये स्टोरी ऐसा ही क्या? एंटर करो, बाहर जाओ, बाहर जाके फिर एंटर करो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो और जो भी इंटरफेयर कर रहे हैं Seems like our उसको little flutter bug has finally calmed down. ओके, ऐसे ही कुछ करना था तो हो गया। Let's go look at the phantoms over there. Oh, I wish you were there, Angel. Oh, you wouldn't believe what happened. I only ran a few laps with Enric, and guess what? He got so dizzy, he tripped over his own feet and smack! Chipped a tooth! Hold still. I'm trying to get the salve on. Look at you. Black and blue and still grinning like a goat. All right, out with it. What do you do to that thick-skulled Enric this time, huh? You're hurt pretty bad. Guess that means no Oak Hollow then. Not that it matters. I bet there's still nothing there but moss and mud. He was picking on the little ones. I couldn't just stand there and watch. So I told him, learn how to kneel before asking others to. And that's when he snapped. Couldn't beat him, but still threw down. That's just like you. By the way, I heard things aren't going too well at the Hunter's Den. Ma and Pa haven't come home in days, and the whole town is holding its breath. We ought to return those swords to Uncle Philo, too. Anyway, Main's Deep will have to wait a bit longer. It's okay. We'll go after the high tide passes. Really? Thought you'd be storming around about it. What if the whispers are real? And the great resonance ability too? Maybe that's how we end up heroes of heroes, both of us. The hero of heroes. That's still what you want, isn't it? It is. I think everyone in the village wants that. The priestesses say that once you become a hero of heroes, even the dark tide won't scare you. Makes sense. Not just any hero, but the hero of heroes. Feels a long way off for us. But maybe it also means making people smile. If the dark tide disappeared, everyone would be happy, right? That sounds too easy to be true. But if that's all it takes, you've done it already, Augusta. But skip Enric. Making a louse like him grin shouldn't count. Augusta?
अच्छा ये अगस्ता है और ये एंजेला। एंजल, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है? Augusta. That's me. वही चीजें, मतलब ये इसका पास्ट है, तो अभी तक तो ये जिंदा ही है, तो ये सब मतलब हो सकता है कि रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड होलोग्राम है, ये बोल सकते हैं। नहीं तो कुछ तो छुपा हुआ है यहाँ पे। I guess there's no denying it now. I thought I might keep my foolishness as a child from you. So Murmurstown, I mean, Fabianum, is your hometown? Yes. It's been a long time. I never imagined I'd see my past like this. I'm curious. एबी का मार्क रेड कर रहा है। About Main's Deep and the Oak Hollow? Yeah. The name Fabianum once stood for glory. As Septimon's front line against the Dark Tide, it held the honor of receiving legends, like Fabius, Attilius, and Valeria. Perhaps that's why Hero of Heroes' tales always lingered here. The most popular one was the tale of a great journey to Main's Deep, the ruins of an ancient civilization. It was said that if you brought 2 lives, yourself and your sword, you'd be granted entry. And within, you'd hear the unceasing whispers of the legendary heroes. We did hear the unceasing whisper of the legendary heroes. तो ये इसको जो मतलब whisper मतलब आ रहा है, हो सकता है जितने भी लेजेंडरी हीरो है वो सब कर रहे। Whispers, they say, capable of awakening resonance ability, as mighty as the hero's own. As for the Oak Hollow, said to lead to Main's Deep, just children's tales. No one ever knew if it was real. But Fabianum never found its hero of heroes. Ever since then, the name was lost, replaced by Murmurstown, a scar that Septimont refuses to face. The whole town held out until the very end, yet no aid ever came from the city of Septimont. Later, I heard from the senior gladiators that on the very morning Fabianum fell, most of the Senate lords were still sound asleep in their warm beds. It wasn't the Dark Tide that doomed my hometown, but those in power who were blinded by greed and failed to act. Forgive me. I let my emotions get the better of me. It's okay, I can tell your LOL has been very sincere. No, it's okay, I feel like I discovered another side of it, another side of you. I see.
Then perhaps I should spend more time with you, like you once did. Anyway, why did the Sonoro reveal all this to us? Maybe it's helping us find that, pure dark tide frequency? The scent does feel clearer now, less muddled. Or maybe it meant to show us something more. Tell Augusta about unwelding gladiator spirit. A soul who endured the dark tide's corruption and still fights to speak the truth. अच्छा, ये हो सकता है कि अगस्टा का ही बात बोल रहा है, मतलब डार्क टाइड्स का करप्शन एंड्योर कर रही है और स्टिल फाइट कर रही है ट्रूथ के साथ। हो सकता है, पता नहीं, इसके जो विस्पर आ रहा है, हो सकता है इसके अंदर ही कुछ डार्क टाइड का पावर मतलब छुपा हुआ होगा, पता नहीं, देखते हैं। His spirit deserves to be remembered. I will go to witness that truth with my own eyes. ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर अभी निकल चुके हैं ना, डार्क टाइड का कुछ पावर उनके बॉडी में रहता है और ज़्यादातर तो विलेन ही है, विलेन तो नहीं है, एक था, बाकी तो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर में जोड़ गए हैं। Those phantoms up ahead. Looks like they've lost control. ये कौन है? डार्क टाइड? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इसको तोड़ना है ना, क्या करना है इसको? जिससे Everyone's been... Angel, what do we... Angel, what happened? You're bleeding. Stay with me. I'll get you out of here. There are monsters everywhere. You won't make it. Not with me. Just leave me. Huh? It stopped again. I don't hear anything. Did it end just like that? I remember being trapped inside with Angel, surrounded by tacit discords. If it hadn't been for a brave gladiator stepping in and fighting them off with his life, none of us would have made it. Perhaps we recreate what happened back then, to stir the phantoms. We defeat the tacit discords, just as that gladiator did. But they're just phantoms. How do you fight something that's not even real? Again, we'll fight them outside the Sonoro. अच्छा, ये सब बाहर जा सकते हैं? पता नहीं। All right, the Waystone. अभी क्या करें? एग्जिट द सोनोरो स्फीयर और द वेस्टर्न, ये पास भी तो है। Tacit discords over there. Time to ओ भाई, दे दिया।
और भी है क्या? Honor cannot be silent. Let's return to the Sonoro. There's likely something new to see there. ओके, अभी ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है। This is it. At least I'm not on my knees. He's not breathing. Thank you. Stay behind me. Stay close, Angel. It will be all right. It's over by the alley. Let's go this way. Stay behind me. Hang in there. Angel, hold my hand. Augusta. ओके, यहाँ पे आ चुके हैं। Are you? यहाँ पे आ चुके हैं। कैसे? अगस्टा यहाँ पे आया था पहले, जो विस्परिंग आ रहा था ना, यहीं से आ रहा था कुछ। मतलब बोल सकते हैं कि ये सीन सोनोस्फियर के बाहर का सीन में दिखा था। Are you going to face it alone? No, don't. Just come with me. I promised I'd get you out of here. No! Augusta! Augusta! Hey, you! Evil monster! Why don't you fight me? I'm not scared. Come on, I'm wide open. Don't look away. I'm not someone you can ignore. No! इसका मतलब क्या है? अगस्टा सामने खड़ी है, उसको कुछ हार्म नहीं कर रहा है, और जो अंदर छुपी है उसको हार्म कर रहा है। इसका क्या मतलब है? Not there! Look at me! I said, look at me! Angel! Angel! The dark tide answers only to strength. Those without it are doomed to be forsaken. Dark tide answer only to strength. Those without it are doomed. अच्छा, तो ये अगस्टा उस समय इतना स्ट्रांग नहीं थी, तो जो एंजल था, एंजल थी, जो भी है, उसके पास कुछ पावर था, इसलिए शायद। Augusta, my brave yet fragile child, your strength is far too feeble, unfit to sate the hunger of the dark tide. हंगर, अच्छा, यूज क्या है? योर स्ट्रेंथ इज फार टू फेवर।
अनफिट टू स्टेट हंगर। अच्छा, उसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं था जो डार्क टाइड को चाहिए था। डार्क टाइड को चाहिए स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। You long to become a hero, to reign by might. But tell me, can the throne of glory be claimed by one so weak? What actually happened? The Dark Tide paid me no mind. Its target was always Angel. And the whispers, they were real, but not as the legends promised. What I heard were words of cruelty. None of it matters now. Those things belong to the past. I was a reckless child, a hatchling, flailing with a sword I could barely hold. True. Though back then, I didn't really have a choice. This is Septimont, a place where ideals bow to strength. As a child, I had no desire for power. But in the city of Septimont, if I wished to rise beyond my origin and silence arrogance dressed in fame and fortune, I had no other path. Now, my strength speaks in my stead, and my blade cuts down every slander. All but prejudice. I know well what those parasites in the Senate are plotting. Draped in the Temple's name, they manipulate public opinion to secure themselves a place on Capitolini Hill. But their absurd schemes betray only fear. Too afraid to face me, they skulk in the shadows, hoping empty prophecies might bring me to my knees. So you don't believe in the prophecies? It's not about belief. It's about not fearing them. The Dark Tide still haunts Septimont. People live in terror of losing their homeland again, and so they cling to the hope of a hero of heroes. As Septimont's Ephor, I must stay strong and answer their call. Our ruler has no right to falter. If my resonance ability raises doubts about my right to rule, then let the true hero of heroes step forth and challenge me. And if none appear, I will decide whether this title is worthy of the weight of a ruler's glory. One of the prophecies speaks of a hero of heroes, wielding extraordinary power, rising from the dark tides. As I see it, you, Rover, fit that image well. Should it be you? I would gladly accept your challenge. A person of immense strength is either a nemesis or a kindred spirit, both of which are intriguing to me and my blade. Me? Honestly, the thought never crossed my mind. From what I've seen, being a true ruler isn't about having immense strength, whether that's a powerful resonance ability or sheer might. I've met people from Huanglong to Renacida who live with real integrity.
Their skills and backgrounds were all different, and none of them were perfect. But what defines them isn't strength or anything that can be measured. It's the spirit they were born with. Resilient, unyielding. That can't be stolen. Believe me, Augusta. I see that same spirit in you. I see. You know, once said something similar to me. About Angel, what happened to her? What happened within the Oak Hollow remains a mystery. All I know is, when I found her, her resonance ability had grown immensely. So powerful that even the Dark Tide could not withstand it. But she failed to control it. I could do nothing but watch as she transformed into something no longer human. After that, I never saw her again. A Dark Tide occurrence 16 years ago. Its frequency must have been more stable than it is now. Maybe this is the truth the Gladiator spirit is trying to share. चलो एंटर करो। यहाँ पे पूरा एक टाउन बसा है क्या? क्या है ये? The blade most worn is often the sharpest. Nice. You defeated the Dark Tide! That's incredible! And your wounds? They're gone? Oh, thank goodness. Did the Whispers give you their power? Angel, are you... Run. It's that smell, Rover! The truth, the Dark Tide, and the pure frequency. Are you certain that's what we're looking for? How could Angel be carrying the Dark Tide's frequency? वही तो कुछ ऐसी चीजें जो कि यहाँ पे मेंशन भी ठीक मतलब मेंशन कर रहे हैं कि डार्क टाइड का जो भी फ्रीक्वेंसी है मर्ज हो चुका है या कुछ ऐसे ही कुछ हुआ है इधर अगस्टा के साथ हुआ है या एंजल के साथ हुआ है। If anyone can sniff out the truth, it's Abby. But just to be sure, I'll send the data to Buling once we're out of here. The Black Shores will give us an answer. All right. टक क्या किसके साथ?
Okay, exit the sphere at the Waystone. Okay, exit हो जाते हैं पर अभी क्या है? It's all done, boss. Tempest ran the data through a couple filters, and we've zeroed in on one spot in the hunting grounds. Pretty sure that's where the Sovereign's been hiding. I'm sending you the coordinates now. So, the frequency we collected really was from the Dark Tide. Yeah, looks that way. But this one's weird. It feels still, like undisturbed water. Quiet like it's asleep. Basically, nothing is disturbing it. If I had to describe it, I'd say it's like a reverberation left behind when the Dark Tide slams headfirst into someone's forte. On its own, it's not as dangerous as the Dark Tide, but if it got mixed with another forte and stirred up, well, who knows what kind of explosion of power that could cause. Angel and the Dark Tide. Understood. Let's go, Rover. Time to meet our prey. I'll tell the others to meet at that location. Please hurry, everyone. The anchor stone must be in place before the Sovereign's hunt begins. Such devotion. Forgive me, but you seem to forget your place, Avidius. Is that so? Perhaps you'd like to remind me, my lord. You must be aware of your rather underwhelming performance during the Tyranos hunt. The Senate's patience is not boundless. It's reserved for those who deserve it. Unless you can present a triumph to match your exploits in Main's Deep, we'll have no choice but to reconsider your candidacy as Septimon's next ruler. Wake up, Avidius. Isn't Murmurstown the very place where your glory began? That, Avidius, is your true arena. Yet here you are, entangled in Augusta's petty concerns, when you could be seizing something far greater. How very amusing, Lord Falco. You seek a ruler strong enough to lead, yet pliable enough to be led. You'd have better luck finding a needle in the sea. Were I in your position, I'd keep my mouth shut. If Septimont falls, so will your ambitions. And allow me to remind you. I entered Main's Deep because I had no other choice, and my duty as a gladiator demanded it. The blood I shed, the blade I wielded, these were proof of loyalty, not entertainment for the Lords. If that's how you see it, then perhaps it is I who should reconsider this alliance. How dare you! Ha! Got some grit, eh? Haven't let ambition cloud your mind. I like that. Falco, what are you... Watch out!
He may be under the Hollow Figure's influence. Judging by his behavior, the Dark Tide has already corrupted his mind. The Anchor Stone is nearly in place. Sir Hercule, would you please take Lord Falco to rest? This isn't far from the entrance to Main's Deep. I remember finding Mizona nearby. It's a herb that helped my companions and me resist the Dark Tide's corruption. Lord Falco has paid for his pride. But as a former hero, he deserves a death free from the Dark Tide's torment. I will do what I can to help. Sir Hercule, please look after him. I'll bring the herb back. I promise it won't take long. Don't worry. All right. You go do what you believe is right. How could it be? No. It must be the Dark Tide's illusion. This wall. No. It can't be. My fellow gladiators, our prey has finally revealed itself. Move to the marked coordinates. It's time to hunt. Find the coordinate and pursue the false 7 false 7. Okay. This is the place. The smell's getting stronger. No traces of the Sovereign. It must be hiding again. We must force it to show itself. Perhaps this could work. शाबाश अभी सब आएंगे अटैक करने के लिए Over there. यार खतरनाक पोज है भाई Hopefully this helps. Wind rises. We'll face judgment. This is my
But my belly is full. I'm so tired. Fate is final. This gently refused shall now become a blade that strikes you down. To spawn the divine gift is to invite consequence. And divinity offers mercy but once. Augusta! Augusta! You know, No. It can't end like this. All able units, split into 2 teams. One will escort the wounded back to base, while the other prepares supplies and maintains position. वो एक टावर जैसा कुछ दिख रहा था, मतलब लग रहा था। पास्ट में वही टावर मेंशन हुआ था एक पिक्चर में, तो वहाँ पे भी एक सीन में था। तो वहाँ पे जो पास्ट हिस्ट्री में दिखा रहे थे कि एक टावर था और ग्लैडिएटर थे और टीडी और वो हो गया बैनस कोरोसरस, क्या बोलते हैं उसको, तो वो मेंशन किए थे। तो हो सकता है कि ये टावर उसी का ही है। भाई बहुत टाइम से खेल रहे, तो हो गया कितना 4 घंटा हो गया पूरा, अभी चल रहा है, ये खत्म भी नहीं हो रहा है। कितना टाइम लग गया अभी? Figures. That area you're in has buried many warriors. For the Sovereign, it's like having a free buffet. And sure enough, you blink and it's already swallowed up all the surrounding frequencies. Now it's a real nightmare. That said, the situation's bad, no doubt, but we're not out of moves yet. The dark tide isn't spreading at full speed. If we act fast and find the Sovereign's weak spot, we might just pull a miracle for Renacita. Let's see. Fire under earth, light be blocked. That's it! Tethys is showing messy internal frequencies and unstable structures. Looks like after stuffing itself with all those frequencies, the Sovereign's completely scrambled inside. If we can stir up the mess in its gut, even with something small, we might just throw him off balance. And then maybe we can wrest the Earthrend wedge back and readjust it to... Signals down. क्या हो गया? Terrible timing. Is there any other way to reach her? It's the dark tide. The entire frequency range is under its control. In other words, we're completely cut off here. How vexing.
dark tides inside. If we feed that monster something else. Right, the anchor stone. You're suggesting we let the Sovereign absorb the anchor stone. If it works, it could suppress it from the inside. Very sharp. But before we act, there are two things we need to prepare. First, we need to get the Sovereign to open up and swallow the anchor stone like a good boy. That will be on you and Augusta, Rover. Second, the dark tide itself must be stabilized to keep the Sovereign nice and solid. My job, naturally. No one else is fit for the task. No. The Sovereign is far stronger than before, and you've only just recovered. There's no way you can take on that much resonance energy at once. I'm not made of glass, Augusta. I am Yuno, the most gifted priestess Septimont has seen in generations. If anyone can hold back the dark tide, it's me. And I'm not going to fall on you that easily. Besides, the sacred flames already showed me my end. In the warmth of spring, surrounded by white flowers, with gentle eyes watching over me. But that day is still far from today. At worst, I'll just need more time to recover. Everything's going to be all right. I promise. Then it's settled. I'll let you prepare. Just give me a signal when you're near the Earthrender. I won't be able to hold the Sovereign's form for long, so make the most of that window. Did you forget anything? Useful, isn't it? Keep it close. No matter where you go, a part of me goes with you. Got it? Since I've given you a tool so practical, I'll ask something in return. Just one thing. Promise me you'll stay by Augusta's side and face whatever destiny sets upon you, together. This isn't a command or a suggestion, it's a personal request. Only you can do this. You know. I think I understand what the unknowable void in your fate really means. It's not nothingness, Rover. All along, it's represented a future that can't be defined by anything but your own will. As long as that void exists, you control your story. Your existence is the meaning itself. So please, support Augusta with everything you have. I've seen how much she trusts you. So trust her in return. No matter what happens, you are not to doubt her in the slightest. That's the spirit. All right, you two. Stop standing around and get moving. The sooner you settle this, the sooner I get to leave this boring place. You know, one last question. For someone without an unwritten fate, is it true they can never break free, no matter how hard they struggle?
I don't know. That's all right. Let's go, Rover. Wait, Augusta! I've been thinking. Our final fate might already be written, but how we walk that path is up to us. We as humans are meant to carve our own way forward. If we can't rewrite fate, then we chase it, outpace it. Then when we catch up, we'll smack it right in the face. Don't forget what you once said. A ruler assumes their place by accomplishing the impossible for their subjects. Let's head to the borders of Murmurstown, Rover. The anchor stone Avidius and the others set there could come in handy. ये स्टोरी बहुत ही लंबा चल रहा है और ये क्या कर रहा है ये Oh, Carlo, I saw it. Main's deep. It doesn't exist. Is it because of me? My memories. No. Oh, Carlo, I saw it. ये बार बार यही वाले बात ही हो रहा है और मेरा सब कुछ क्लियर है अभी कौन बाकी है बात करने के लिए कुछ नहीं है चलो हो गया तो यहाँ पे एंकर स्टोन है इसको यूज करेंगे शायद रिमूव करना है ओके रिमूव का प्रोसेस क्या है जर्नी अहेड अलाउ नॉट आर यू रेडी यस Here. Why did you... Buling mentioned even something small could have a great influence. The smaller, the more unnoticed. Come, stand with me to face our reckoning. Let this small thing pry open the cracks in fate's door. ये क्या है देख लेते हैं वो चीज ही क्या है बैग that for pure and silent you can just be slumbered long enough to leave one ripple important कहाँ पे लिखा है कुछ
और कुछ था शायद, हाँ ये स्टैंडर्ड पीस ऑफ इंकस्टन। क्रैक ओपन करने के लिए यूज करना है। Leave it to me. अरे यार, अच्छा ये ऐसा ही करते क्या? The opponent in control. Heavily Wind call. Waves follow. Good. The wicked will face judgment. Tempest flashes. Fight by my side. ओके, यहाँ पे सब खत्म हुआ शायद। Wind rises. हिल कर लेते, खुद का हिल तो है ही। एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? Not be silent. Hopefully this helps. ये सब कौन है? Conquest begins now. See my triumph. ये सब करप्टेड हो चुके हैं शायद। ये करप्टेड, ये मतलब सोल है शायद इन लोग का। पास्ट का कुछ है, ये सब करप्टेड है। ये क्या है? डिफीट द टेस्ट कार्ड एंड पास थ्रू द मर्मरस्टाउन। अरे यार, इतने बड़े बड़े क्यों आ रहे? Leave it to me. Hopefully this helps. In control. Invincible. Undying glory. खत्म हो गया। अभी डिफीट करना है, बहुत टाइम लग गया ये।
Go chase your fate, Augusta. इस वाली पार्ट में बहुत सारे खतरनाक सीन है, फाइटिंग सीन बहुत है। What's wrong, Augusta? Nothing, just something on my mind. क्या चल रहा है माइंड में? Do you still remember what the Whispers told me 16 years ago? The Dark Tide answers only to strength. Those without it are doomed to be forsaken. Now I think of it, it is rather interesting. क्या चीज इंटरेस्टिंग? I've never told anyone this before. But ever since the Dark Tide decided to forsake me, those broken whispers have never left. यार क्या बोल रहा है भाई? They echoed in every battle, telling me when to dodge, when to strike. But with each opponent that fell, the whispers began to fade. Until I became the Ephor. That's when they returned. Louder, never giving me a single moment of peace. I tried to shut them out. But every time I strayed from their guidance, fate would strike me down in the cruelest of ways. I thought I was the master of my fate. But the truth is, they always knew the path better than I ever could. The old prophecy about Raguna, that they once whispered to me, has come true. Now, it is time for me to put their power to the test. Leave it to me. Okay, अभी ये क्या है? During the combat, Augusta slowly build up their momentum. When the momentum bar is full, turn yellow. Enter the attack phase stage. After while the yellow, at the yellow, the momentum bar will be red. Augusta will launch the attack. Casting Resonance Liberation interrupt Augusta attack and she will recharge momentum after start. अच्छा, इसको interrupt करना है, red को after interrupt करना है. What? What exactly do you want to do? Keep it together. The wicked will face judgment. Keep it together. Hopefully this helps. 「
One of the prophecies speaks of a hero of heroes. As I see it, you, Rover, fit that image well. As long as that void exists, you control your story. Your existence is the meaning itself. So this is her plan. Using this battle to mark me a hero of heroes so the temple's prophecy will be fulfilled. Augusta. I have realized this is the duty I must fulfill. Show me your strength. The one to stand beside me for the throne is you. And only you. Tempest of slashes. Wind howls. Unfettered by bounds. Annihilation. Last chance. Tempest of slashes. The wicked will face judgment. Do not waver. Step forward and receive the divine gift. With this power, you shall rise as the one true ruler of Septimont. And glory return with the blood of the old king. You proved the prophecy true. So why now? Why this sudden urgency to stop me from fulfilling it? Unless I was your target all along. That power you spoke of was always just a trap. Answer me. Who are you? And what did you do to Angel? How foolish, Augusta. The will of the divine is not to be questioned. Alas, because it is small to comprehend the grand vision. Rover, what is stopping you from being Septimon's hero of heroes? You, the unwritten one, are blessed to shape your own fate. And I must walk my own path as ruler. Go. Fulfill the prophecy that was always meant to be. I give my blood, so that the true hero may rise. Raise in faithless one. Receive the judgment of the heavens.
The sacred crucible shall reshape your soul. Fool. I already said Raguna's divinity didn't get a seat on the ship. This is your end, Augusta. But we're not done just yet. Insolent heretic. If this is what you want, we shall grant you an endless peace of despair. My sword. Cato. Where's my sword? What haunts you, my teacher? A hero shouldn't fall to the dark tide. I need my sword to fight back. Please, take it. Take it and fight for what you believe in. Timeless empathy. Dimness, like dust. The throne of glory will never be claimed by the weak. A loser, left with nothing. How wrong you are. My lady. People follow. For it never fails to light their way. This is how I rule. I will show you with my own face! Honor. Augusta. We meet again, my friend. It seems my will won't let me miss a chance to fight side by side with you. Come, Rover. I've been waiting for this moment. Victory! Scene of my triumph! Here! A match in one strike! Pathetic struggle! Barely met. Never back down. Win fall. Wait fall. Hopefully this helps. Keep it together. Last chance. Never back down. Barrage of conquest! Annihilation! Wind howls. Unfettered by bounds! Bad timing. Keep it together. This is mine.
In control. Never back down. Hopefully this helps. So, it's finally come to this. This is how a true battle should be. Robert, fight by my side. Listen. The blade of victory shall pierce the hollow sovereign's heart. Waves rise. Judgment strikes. Hopefully this helps. Fight by my side. Undying blood. A worthy opponent. Back down. Tempest is like. Hopefully this helps. The wicked will face judgment. I am the Tempest! Spirits lost to the dark tide. I hear your cries. Join me in battle! Let that false divinity witness what true heroes are and what it means to wield unshakable power! May applause greet you, heroes of Septimont. A hard-won battle, wasn't it? And yet victory will choose our side. Okay. Yes. वो खत्म हुआ कि नहीं वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ दिखाया है कि फाइट हुआ है, एंड हुआ कि नहीं पता नहीं. It's all thanks to you, Rover, Septimon's hero of heroes. In that case, I could say the same to you. As the prophecy goes, the hero of heroes wielding extraordinary power rising from the dark tides. As I see it, you, Augusta, fit that image well. Extraordinary power. That's a bit much. I know my limits. But I do think I've earned that title. And it's one we could share together. Besides, the temple never said there could only be one hero of heroes.
What really happened to you in the Dark Tide? I thought you might have... It wasn't a pleasant experience. But in a strange way, it was refreshing. If you want to hear the full story, I'll tell you another time. But back inside the Dark Tide, I think the lost frequencies were always guiding me, shaping who I was becoming. Even trapped in that abyss of despair, those fallen heroes never gave up. They lit a faint, warm light in the dark for me. And you, along with everyone who stood by me. Without you, we couldn't have won this battle. Perhaps the title of ruler is too narrow and too hollow to define the true spirit of humankind. A civilization's glory is forged by generations of brave souls. It was never meant to be one person's medal of honor. I want to ask you something. Why did you ask me to join the hunt? Because my warriors and I wanted to fight beside someone like you. And that hasn't changed. But I will be honest. Part of it was because of your unwritten fate. I'd been preparing for this hunt for a long time. At first, all we had were a few vague glimpses from the priestesses, and a handful of prophetic murals. No one knew when or how the disaster would strike. And then, you showed up. You've surely seen the unfinished mural in the temple, the blank wall and the unwritten fate. So I took a gamble, believing you were the key to this hunt. I couldn't explain it back then, not when I wasn't certain myself. But in the end, we realized what that blank represents. And my gamble paid off. The one who deserves to be a hero of heroes, with power over the Earthrend wedge. Thank you for your trust. This is my response to your trust. Okay. And the promise I swear to keep. Now it's time for me to honor my promise. This is the end of our journey. The Earthrend wedge. अच्छा, इसके बाद इसके कोई पार्ट रोवर के साथ नहीं है शायद, पता नहीं आगे का स्टोरी क्या है। ये तो सोर्स के हिसाब से पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 है इसका, देखेंगे। It hasn't been quite what I expected, but I'm very glad we made it this far together. Imperator. Go. I'll wait for you here.
अच्छा, मुझे जाना पड़ेगा खुद ही। ओके, इम्परेटर रिलीक पीपर हेडिंग टू द इम्परेटर रिलीक को उठाना है और जाना है। Discoid. This warmth. I feel you, Imperator. I'd better get back. Did you find what you seek? A discoid. Looks like a compass. The structure's odd. There might be a hidden compartment inside. Can you try opening it? I'll try. देखो क्या है। It can. क्या है? अच्छा, ये नहीं खुल रहा है। If this relic was left by the Sentinel, brute force won't get us anywhere. We'll need a different approach. Maybe a special key, a mechanism, or a password? Any ideas? Bring up the black sword, bring the Catathea. ब्लैक sword के ले जाते हैं, Catathea को पता है नहीं। Catathea भी ऑप्शन है, उसको भी पता होगा क्योंकि इम्परेटर के साथ लिंक थी वो। तो ब्लैक sword में दे देते हैं, शायद Catathea और बाकी देख लेंगे। The Black Shore's records on the Sentinel may give us more clues. More importantly, I need their data on the Dark Tide. The Earthrender is holding back the Dark Tide for now, but we're not in the clear yet. Those sudden outbreaks and the way it's fixated on you. It's not just a coincidence. You're right. With the Black Shore's tech, we might be able to outwit our unseen enemy. I'll contact them as soon as we're back. All right. Let's set all this aside and enjoy the victory we've earned. अभी तक तो विक्ट्री बोल रहे, पता नहीं उसका मतलब उसका बॉडी या उसका कोई भी पार्ट दिखाई नहीं अभी। जो भी लास्ट अटैक हुआ है, एक चीज होता है कि नहीं, लास्ट फाइनल सीन में दिखाते हैं कि वो खत्म हो गया या कुछ डिसॉल्व हो गया एयर में, पता नहीं। There's probably a bonfire roaring at the encampment by now. Rover, it's time to return to those waiting for us. We won this battle, but the war is far from over. The road ahead still steeped in blood and thorns. But with you, and everyone who stood beside us, the banner of Septimont will never fall. With the eternal sun as my witness, the name of hero
belongs to you all. ये सीन अच्छा है। भाई ये वाला आदमी को जब भी देखते कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करता है। ये लेके जाएगा अभी। What a beautiful ending, my near-perfect protagonist. I must confess, even I didn't see this coming. Should this be your final act? No. No, allow me this small indulgence as your creator. Christopher. The quill of fate may be sharp and cold, but still I want to see how far the soul I created can go. कौन सा सोल किसके क्या क्रिएट? आई वांट टू सी हाउ फार द सोल आई क्रिएटेड कैन गो। After all, क्या चल रहा है? it's the stories that sink deepest into the mire that stir the heart most. Don't you think? It's been a while, Rinesita. न्यू कैरेक्टर कौन है ये? What prey do we hunt this time? अच्छा, मतलब लास्ट टाइम ये तो नहीं है अभी, मतलब क्या बोलते हैं इसको? कौन सा कैरेक्टर था वो? प्रोलोवा नहीं है वो। मैन मतलब था इनका एजेंसी का, मतलब एजेंसी तो नहीं बोल सकते, इनका साइड का। हो सकता है कि उसके बाद ये नया कैरेक्टर आ गया। The Trenodian. तो थ्रेनाडियन, ये तो थ्रेनाडियन तो नहीं है। तो थ्रेनाडियन किसको बोलिए? खुद को। दूसरों को बोल रही होगी। क्वेस्ट कंप्लीट। ट्रॉफी मिला है। यहाँ पे कुछ साइड क्वेस्ट खुल गया है, अभी वो सब देखना है। ओके, साइड क्वेस्ट हो गया है, खुल गया है। अभी मुझे देखना है क्या क्या सब मिला है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। इसका कुछ मिला है शायद। अच्छा, इसको ये एक मिला है, एक्टिवेट हो जाए। क्राउन, अच्छा क्राउन ये हर वक्त ऐसे ही रहता है क्या? कोई देखते हैं। अच्छा, क्राउन ऐसा हर वक्त रहेगा। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिक है। ज्यादा कुछ कैरेक्टर नहीं है मेरा एक्चुअली। टीम बिल्ड करने के लिए कोई कंबाइंड कैरेक्टर नहीं है वैसे। टीम बिल्ड करने के लिए ब्रांड के साथ लूपा कर सकती है, लेकिन वैसे इसका सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं है। सपोर्टर चाहिए, एक सपोर्टर चाहिए। कुछ भी नहीं है वैसे सपोर्ट देने के लिए।
टीम तो है लेकिन सपोर्ट नहीं है। और कुछ बाकी है, देख लेते हैं। बैक क्वेस्ट, क्वेस्ट वो वाला होगा, ये डेली क्वेस्ट साइड क्वेस्ट है। अच्छा साइड क्वेस्ट है, साइड क्वेस्ट में एक खुला है ये पेंट ऑफ प्लेटलो प्लेटस, और ये तो डेली है। अंडर कवर एक्टर, अरे यार ये क्या है, ये नया है डेली क्वेस्ट का। अच्छा, और यहाँ पे खुल गया है इवेंट क्वेस्ट का। इवेंट क्वेस्ट का मैं देखने वाला था, इवेंट क्वेस्ट में इवेंट का एक चीज था कि मेन क्वेस्ट खत्म करने के बाद इवेंट क्वेस्ट खुलेगा, और ये शायद खुल गया है। ये परमानेंट था ना, इसको खोलना बाकी, ये वाला खुल चुका है। अभी इसको करना है, 12 दिन बाकी है। और ये भी करना था, ये किया नहीं, इसको भी देखना है। एक्टिव नहीं हुआ है, एक्टिव मतलब क्लेम करने के लिए कुछ एक्टिव नहीं हुआ है। और इसको भी देखना है, ये खुल गया है, इसका भी देख लेंगे। और ये परमानेंट है, ये हो जाएगा, क्लेम कर लेते हैं। और यहाँ पे ये तो 29 डेज का है, इसका कोई मुझे फायदा नहीं होगा। ये भी है, खुल गया है। मैं तो इवेंट कुछ मतलब टच भी नहीं किया हूँ, बाकी है, बहुत सारा बाकी है। मुझे करना है ये वाला करना है, जो कि 12 दिन बाकी है। और 28 डेज तो बाकी है, लेकिन वो बाद में भी कर सकते हैं। ये 28 डेज का है, 12 दिन जो है ये इसको करना, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये परमानेंट है, ये भी खत्म हो चुका है। ये 29 डेज 90 डेज, इसका ये नहीं कर सकते। ये अभी थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है कि मेरा कैरेक्टर बिल्डअप ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये आगे नहीं जा रहा है। बिल्डअप में से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मेरा ठीक नहीं है, अभी कैरेक्टर ही नहीं है टीम अप करने के लिए। जितना पहले था कर दिए थे, उसके बाद जितना डिफ़िकल्टी बढ़ रहा है कैरेक्टर मेरा उसी हिसाब से नहीं है, तो उसको देखेंगे बाद में। वो तो आ रहा है, ये इवेंट खत्म होने के बाद फिर से ये आ जाएगा। लास्ट टाइम भी वैसे हुआ था। ये 5 दिन बाकी है, इसको कर लेंगे, ये इसका ज़रूरी है, इसको कर लेते हैं। और न्यू कंटेंट अवेलेबल, ट्राई इट आउट, ओके ठीक है, इसको कर लेंगे। और ये 28 डेज का है, इसको बाद में देख लेंगे। लेकिन ये लेडी ऑफ द सी, इसका ये नया आ चुका है, इसको अटेंड भी कर लेंगे। और बाकी जो है वो कुछ फ़ायदा ही नहीं, ये तो कंप्लीट हो चुका है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो चुका है। और इसका जो कैरेक्टर है ये इसको इलेक्ट्रिक टाइप का है ना, लेकिन उसी हिसाब से तो इसका टीम अप करने के लिए कैरेक्टर नहीं है मेरे पास। वही चीज़ है, वही एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, वही चीज़। और ठीक है, अब कहीं पे एंड कर लेते हैं, क्योंकि अभी मिशन कंप्लीट हो चुका है। और मुझे ये देख लेता हूँ तो क्या थोड़ा पड़ टॉपिक्स देख लेता हूँ, कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। क्लेम एक बार में 10, 15, 25 हो गया, 30, 35, यहाँ पे 35 मिल चुका है, 5, 35, 40 मिल चुका है। और यहाँ पे 45, 55 मिल चुका है अभी। और यहाँ पे गाइड बुक में क्या है, और ये हाँ गाइड बुक में भी कुछ मिल भी चुका है, 20 मिला है। और यहाँ पे एक चीज़ है, ये वाला मुझे आ रहा है, ये जो हाँ ये 5 दिन का है, जो वो वाला है 5 दिन का, ये भी यहाँ पे मैं आ रहा है, तो इसका भी कर लेंगे। और फाइनल मेरा फ्री वाला कलेक्ट कर लेते, ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी तो कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब आज स्टार्ट किए हैं, बाकी जितने भी थे वो सिर्फ लॉगिन करके जो भी आ रहा था उतना ही कर रहे थे। और अभी 6 पहुंच गए हैं, अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा, बहुत सारा है, नहीं होगा।
20 डेज में ख़त्म कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। खेलेंगे तो तभी करेंगे ना, नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा तबीयत ख़राब ही रहता है। मेरा नहीं है, घर में, तो देखना भी पड़ता है, टाइम नहीं निकल पा रहे हैं, तो वही चल रहा है। ओके ठीक है, तो अभी हो गया ये, आज यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, अभी रखते हैं। और कुछ बाकी रह गया क्या? एक बार देखते हैं। ओके, उसको ले लेते हैं। इसको डिफीट कर सकते हैं या नहीं? डिफीट कर सकते हैं ना? कितना मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं होगा। $71 है ना, कहाँ मुश्किल है? I smell fear. Such is their blessing. I'll end you. Here with me. ओ भाई, ये तो गजब कर रहा है। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे लगा इसका मिल जाएगा, लेकिन इसका भी नहीं मिला कुछ। ओके ठीक है, मिल जाता तो अच्छा होता, मिला ही नहीं। ओके, तो यहीं पे रख देते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम देखेंगे नया मिशन, तो फिर आज यहीं पे रखते हैं। बाय बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।